शहीदी हर मैच में चलती है। तो अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन भी इतनी आसान नहीं है, इनको पकड़ना भी इतना आसान नहीं होने वाला। मतलब पहले 4 बैट्समैन बहुत ही कमाल के आ जाते हैं दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों मोहम्मद नबी पावर हिटिंग के लिए मौजूद हैं। हालांकि मोहम्मद नबी को 6-7वें नंबर पर बैटिंग मिलती है, लेकिन दोस्तों पावर हिटिंग के मामले में मोहम्मद नबी का भी यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि ये चले नहीं है, जब ये चलते हैं तो किसी भी गेंदबाज की दुर्घट बना सकती हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों अगर बात कर लें तो 2 और बैट्समैन मिल जाते हैं, मेरे फेवरेट है दोस्तों। सच्ची बताऊं, इकराम खिल जब से आई हैं इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं, हर मैच में 60-70 रन बनाते हैं। और अजमत की तो क्या ही बात है, कमाल के ऑलराउंडर मिले हैं आज अफगानी टीम को। हर मैच में स्कोर भी करते हैं और हर मैच में अच्छी खासी बॉलिंग भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन भी काफ़ी लंबी है। अगर देखा जाए तो 7वें नंबर तक ज़बरदस्त बैटिंग मौजूद है। और उसके बाद दोस्तों ऑलराउंडर की सूरत में राशिद खान आ जाते हैं, कमाल की स्पिन गेंदबाज हैं और अच्छी खासी बैटिंग भी करते हैं। मुजीबुर रहमान की बात कर लें दोस्तों तो मुजीब का भी यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बल्लेबाजों को फंसाते हैं और अपनी गेंदबाजी का जलवा पूरे शायकीन क्रिकेट को दिखाते हैं। नूर अहमद की तो क्या ही बात है, लगभग 21-22 साल का लड़का है और अपनी गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज का शिकार कर सकता है। लगता ही नहीं है दोस्तों कि ये कोई यंगस्टर है, ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसे, और आते ही दोस्तों बैट्समैनों को परेशान करना शुरू कर देता है। फ़ारूकी की बात करें तो अच्छा बॉलर है दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज फिर अफगानी टीम एक चेंज करने वाली है, क्योंकि पिचेस जो है वो दोस्तों फास्ट बॉलर की हेल्प करती हैं। तो मुझे लगता है शायद आज फिर अफगानी टीम कहीं ना कहीं नूर अहमद की कुर्बानी दे सकती है, जो कि नहीं देनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंग्लिश टीम में जो है वो स्पिनर के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं खेल पाती। तो सबसे बढ़िया स्पिन अटैक इस टाइम दोस्तों अफगानिस्तान की टीम का है। अफगानी टीम को उसी प्लेइंग 11 के साथ दोस्तों मैदान में उतरना चाहिए जो पहले थी। अब देखना ये है कि क्या अफगानिस्तान की टीम भी कोई चेंज कर पाएगी या नहीं। तो मुझे लगता है अफगानिस्तान की टीम एक चेंज करने वाली है, जबकि दोस्तों ऑस्ट्रेलियन टीम 2 चेंजेस करने वाली है। ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पर मिचेल मार्श को वापस लाएगी और साथ में दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल को बाहर लाएगी। लेकिन दोस्तों अभी तक ये पता नहीं है कि किस किस को बाहर निकालेगी। एक तो कैमरॉन ग्रीन हो सकते हैं, दूसरे दोस्तों मार्नुस टोनिस हो सकते हैं, या फिर मार्नुस लबिशाने हो सकते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों बात कर लें आज के मैच के बाद यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में क्या बनेगा। तो पॉइंट्स टेबल में दोस्तों यहाँ पर बहुत खलबली मचने वाली है, क्योंकि ये पॉइंट्स टेबल जो है ना वो न सिर्फ यहाँ पर सेमीफाइनल की टीमों को देखा जाएगा, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की टीमों को भी देखा जाएगा। पहली 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में क्वालिफाई करेंगी, जबकि 2 लास्ट वाली टीमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इंडिया पर खतरे मंडला रही हैं। इंग्लैंड की टीम दोस्तों, ना कि इंडिया, इंग्लैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो सकती है, श्रीलंकन टीम भी बाहर हो सकती है। तो अब यही देखना है कि कौन कौन सी टीम यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में क्वालिफाई कर पाएगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों हम बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल में क्या सिचुएशन है। इंडिया की टीम दोस्तों यहाँ पर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है, साउथ अफ्रीकन टीम भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है, और समझ लीजिए दोस्तों ऑस्ट्रेलियन टीम तो वैसे ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अगर मैच हारे या जीते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की रन रेट पहले ही बहुत ही कमाल की है। तो देखना ये है कि क्या ऑस्ट्रेलियन टीम आज का मैच जीत पाएगी या नहीं। अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलियन टीम आज का मैच जीत पाती है तो फिर अफगानिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी। अब दोस्तों अभी भी 3 टीमें तो पहुंच चुकी हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जबकि 3 टीमें, चौथी टीम कौन सी हो सकती है उसमें दोस्तों न्यूजीलैंड भी हो सकती है, पाकिस्तान भी हो सकती है और अफगानिस्तान भी हो सकती है। तो इन तीनों टीमों के सभी मैच बहुत अहम है, क्योंकि तीनों ही टीमें बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं हम सेमीफाइनल में पहुँचे। सबसे पहले दोस्तों हम अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं दोस्तों, अफगानिस्तान के टीम के 2 मैच रहते हैं। अगर अफगानी टीम अपने दोनों ही मैच जीत लेती है तो फिर आंखें बंद करके सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। उसके बाद दोस्तों अफगानी टीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फिर चाहे पाकिस्तान जीते या हारे, और न्यूजीलैंड फिर चाहे जीते या हारे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें बाहर हो जाएंगी। और अगर अफगानिस्तान की टीम दोनों ही मैच जीत लेती है,
और दोस्तों अगर अफ़गानी टीम दोनों में से कोई एक भी मैच हार जाती है तो फिर अफ़गानी टीम बाहर हो जाएगी। फिर मौका मिलेगा दोस्तों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम का बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड का भी एक मैच रहता है श्रीलंका के खिलाफ, जबकि पाकिस्तान का भी एक मैच रहता है इंग्लैंड के दरमियान। तो यही देखना है कि क्या न्यूजीलैंड की टीम दोस्तों श्रीलंका को अगर हरा देती है तो न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका के हाथों हार जाती है और पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में जा सकती है। दूसरा दोस्तों ऑप्शन पाकिस्तान के पास ये है कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में अगर बारिश हो जाती है तो पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को हराकर फिर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। लेकिन दोस्तों पहला ऑप्शन बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि श्रीलंकन टीम न्यूजीलैंड को हरा पाएगी। लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में बारिश भी है। अगर दोस्तों उस मैच में बारिश हो जाती है तो फिर भी पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में जा सकती है। अगर दोस्तों पाकिस्तानी टीम यहां पर सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला इंडिया के साथ होगा और साउथ अफ्रीका का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। लेकिन दोस्तों उससे भी बड़ी मुश्किलात यहाँ पर दूसरी टीमों के लिए ये आ चुकी है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को इसी पॉइंट्स टेबल की बना पर टीमों को देखा जाएगा। मतलब टॉप 8 टीमें यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में क्वालिफाई कर पाएंगी, जबकि 2 एंड वाली टीमें बाहर हो जाएंगी। तो आज का मैच बहुत ज़्यादा अहम है, न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए भी, क्योंकि दोस्तों अगर अफगानी टीम इस मैच को जीत लेती है तो फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत कर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, पाकिस्तान की टीम भी बाहर हो जाएगी और इसी के साथ ही दोस्तों अगर बात कर लें न्यूजीलैंड की टीम भी बाहर हो जाएगी। तो आज के मैच में दोस्तों मौसम के बारे में बताते चलें, यहाँ पर मौसम काफ़ी गर्म रहने वाला है, मतलब 30 का टेम्परेचर है, खिलाड़ियों के पसीने निकलते हुए दिखाई देंगे और साथ में दोस्तों यहाँ पर स्पिनर्स की पिच बिल्कुल नहीं है। तो अफगानिस्तान की टीम को कहीं ना कहीं ये नुकसान हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान का स्पिन अटैक ही बहुत ख़तरनाक है। अगर पिच जो है वो स्पिनर्स के मुताबिक नहीं होगी तो फिर अफगानी टीम को यहाँ पर दोस्तों काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर मिचेल स्टार्क की चलेगी, जोश हेजलवुड की चलेगी और साथ में दोस्तों पैट कमिंस भी अच्छी खासी बॉलिंग कर सकती हैं। और अगर बात करें दोस्तों अफगानिस्तान की फास्ट बॉलिंग की तो नवीन उल हक और फ़रूकी इस पिच के ऊपर अच्छी गेंदबाजी कर सकती हैं। मसला ये है कि अफगानिस्तान की स्पिन गेंदबाजी अच्छी है जबकि फास्ट बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो यही देखना बाकी है कि अफगानी टीम टॉस जीतकर क्या फैसला करने वाली है। मेरे ख्याल में दोस्तों अगर अफगानी टीम को टॉस जीतना है तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग के लिए नहीं बल्कि बॉलिंग के लिए जाना चाहिए। जितना टारगेट मिलता है दोस्तों उसे चेज करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर दिखाया गया है कि पहले खेलने वाली टीमें 306 रन कर लेती हैं और बाद में खेलने वाली टीमें दोस्तों प्रेशर की वजह से 206 के करीब ही रहती हैं। लेकिन दोस्तों टॉस हमें ये बताता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पहले खेलने वाली टीमें 54% मैच जीतती हैं और बाद में खेलने वाली टीमें 46% मैच जीतती हैं। अगर कम्बिनेशन की बात कर लें दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दस्तयाब है। मतलब यहाँ पर अगर ग्लेन मैक्सवेल आ जाती हैं तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन भी बढ़िया हो जाएगी। मतलब 2 स्पिनर हो जाएंगे। कैमरॉन की जगह दोस्तों कैमरॉन ग्रीन की जगह यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल आ सकती हैं, तो 2 स्पिनर हो जाएंगे, 3 फास्ट बॉलर हो जाएंगे और एक ऑलराउंडर मार्कुस टोनिस हो जाएंगे। और इसी तरह दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि मार्नुस लबीशाने को बाहर करके इनकी जगह मिचेल मार्श भी टीम का हिस्सा बन सकती हैं। तो यही देखना बाकी है। अगर बात कर लें दोस्तों ऑस्ट्रेलियन टीम की तो टॉप ऑर्डर बहुत ही खतरनाक है, जिसमें डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड दोनों ही पावर प्ले का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करती हैं और पावर प्ले का इस्तेमाल करके किसी भी गेंदबाज को तहस नहस कर सकती हैं। स्टीवन स्मिथ भी बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं और उसके बाद दोस्तों मिचेल मार्श मेरे ख्याल में यहाँ पर मार्नुस लबीशाने की जगह खेलते हुए दिखाई दे सकती हैं। जोश इंग्लिश यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं, अच्छी विकेट कीपिंग भी करती हैं और जब से आई हैं इनकी टीम जो है वो अच्छी खासी नज़र आ रही है। पहले 2-3 मैच हालांकि ऑस्ट्रेलियन टीम हार चुकी थी, लेकिन दोस्तों जब से 2-3 यहाँ पर चेंजेस कर रखी हैं उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है। कैमरॉन ग्रीन की जगह दोस्तों आज के मैच में ग्लेन मैक्सवेल खेलते हुए नजर आएंगे और उसके बाद दोस्तों मार्कुस टोनिस यहाँ पर टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। और अगर बात कर लें दोस्तों फास्ट बॉलिंग की तो पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क आ जाते हैं, दोनों ही तेज गेंदबाज हैं। इसी के साथ ही दोस्तों जोश हेजलवुड भी यहाँ पर अपनी तेज गेंदबाजी का जलवा दिखाने वाले हैं। अगर बात करें दोस्तों स्पिनर्स की तो ऑस्ट्रेलिया के पास एडम जैम्पा के रूप में एक कमाल का स्पिनर आ जाता है
और दोस्तों अफगानी टीम की अगर बात कर लें तो अफगानिस्तान की टीम भी बहुत ही कमाल की है। गुरबाज और इब्राहिम जादरान यहाँ पर ओपन करते हुए दिखाई देंगे। दोनों ही कमाल के बल्लेबाज हैं। ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों हर तरह की बैटिंग करती हैं, चौके छक्के लगाती हैं, विकेट को रोकती हैं, इवन के दोस्तों लंबी बारियां भी खेल लेती हैं। और उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर रहमत शाह अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाएंगे। हशमतुल्लाह शहीदी बहुत अच्छी फॉर्म में आ चुके हैं और मोहम्मद नबी को पावर हिटिंग के लिए यहाँ पर रखा गया है। इकराम खिल और अजमत कमाल की बैटिंग करती हैं। मैंने शायद ही कभी देखा हो कि ये स्कोर करने के बगैर आउट हुए हो। मतलब कमाल के दो बल्लेबाज मिले हैं मिडल ऑर्डर में। और दोस्तों साथ में अजमत एक तीर से दो शिकार करते हैं, मतलब फास्ट बॉलर भी हैं और साथ में अच्छी खासी बैटिंग भी करते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अफगानी टीम को। अगर बात करें दोस्तों राशिद खान और मुजीबुर रहमान की, तो ये बहुत ही ख़तरनाक स्पिनर है। मुजीबुर रहमान अटैक बॉलर के तौर पर चुने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुजीब आज ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए खतरे की घंटी भी बजा सकते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों नूर अहमद और फरूकी भी यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर पॉइंट्स टेबल की दोस्तों बात कर लें तो पॉइंट्स टेबल में इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तीन टीमें तो लगभग दोस्तों सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। चौथी टीम कौन सी हो सकती है यही देखना बाकी है। चौथी टीम में न्यूजीलैंड की टीम भी हो सकती है, पाकिस्तान की टीम भी हो सकती है और अफगानिस्तान की टीम भी हो सकती है। तो दोस्तों यही देखना बाकी है। तीन टीमें यहाँ पर उम्मीदवार हैं, इसलिए अफगानिस्तान का ये मैच बहुत ही अहम होने वाला है तीनों ही टीमों के लिए। अगर दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम अपने 2 मैच जीत लेती है, 2 मैच बाकी है, तो इसके 12 पॉइंट्स हो जाएंगे, जिसके चलते हुए ये सेमीफाइनल में पहुँच जाएगी। अगर अफगानी टीम सेमीफाइनल में पहुँचती है तो फिर पाकिस्तान जीते या हारे, न्यूजीलैंड जीते या हारे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दोनों ही टीमें बाहर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों अगर अफगानी टीम दोनों में से कोई एक भी मैच हार जाती है तो ये बाहर हो जाएगी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 से। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का चांस होगा। अगर पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को हराती है और श्रीलंकन टीम दोस्तों यहां पर न्यूजीलैंड को हराती है तो पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। दूसरा ऑप्शन दोस्तों पाकिस्तान के पास ये है कि अगर श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच में बारिश हो जाए, मतलब उस टाइम दोस्तों बारिश के 80% चांसेस हैं उस दिन जब न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है। अगर बारिश हो जाती है तो मैच जो है वो कैंसिल हो जाएगा। दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट्स मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों न्यूजीलैंड का 9 पॉइंट्स हो जाएंगे और पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को हराकर यहाँ पर 10 पॉइंट्स करेगी और सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। तो दोस्तों अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो फिर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा सेमीफाइनल में, और उसके बाद दोस्तों साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होने वाला है सेमीफाइनल में। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत ही कमाल के मैच की शुरुआत होने वाली है, जहाँ पर अफगानिस्तान की टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम मैदान में उतरती हुई दिखाई देगी। ये बहुत ही अहम मैच है 2023 के वर्ल्ड कप का, क्योंकि अफगानी टीम पाकिस्तान की किस्मत और न्यूजीलैंड की किस्मत का फैसला करने वाली है। अगर अफगानी टीम इस मैच को जीत जाती है तो अफगानी टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जीत कर दोस्तों सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों की छुट्टी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों ये मैच बहुत अहम है, न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि न्यूजीलैंड के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। मतलब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड चाहेगी कि अफगानिस्तान की टीम इस मैच को ना जीते, लेकिन दोस्तों अफगानी टीम के बारे में अगर बात कर लें तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। इसका मतलब यही हुआ कि न सिर्फ इस मैच को अफगानी फैंस देखने वाले हैं बल्कि पाकिस्तानी फैंस, ऑस्ट्रेलियन फैंस, न्यूजीलैंड के लोग और पाकिस्तानी लोग भी दोस्तों देखने वाले हैं, क्योंकि ये मैच न सिर्फ अफगानिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा बल्कि पाकिस्तान की किस्मत और न्यूजीलैंड की किस्मत का भी फैसला करने वाला है। अगर दोस्तों अफगानिस्तान की टीम आज ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है और उसके बाद दोस्तों अफगानी टीम साउथ अफ्रीका को हराती है तो फिर चाहे न्यूजीलैंड जीते या हारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर हो जाएगी। और पाकिस्तान फिर जीते या हारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें बाहर हो जाएंगी। इसलिए ये मैच बहुत ही अहम होने वाला है दोस्तों, जो कि मुंबई के स्टेडियम में खेला जाएगा। लगभग दोस्तों 50 से 60 हज़ार शायकीन क्रिकेट इस मैच को देख सकती हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है, लगभग टेम्परेचर 30 के ऊपर का है। मतलब यही हुआ कि खिलाड़ियों के पसीने छूटते हुए नज़र आएंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों आज मुझे लगता है कि पिच जो है वो स्पेशली फास्ट बॉलर्स की हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों मिचेल स्टार्क गोली की रफ्तार से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। जोश हेजलवुड भी यहाँ पर अच्छी
गेंदबाजी कर सकती हैं, और मुझे लगता है ये स्पिनर्स के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि दोस्तों 78% यहाँ पर फास्ट बॉलर की चलेगी, जबकि सिर्फ 22% यहाँ पर स्पिनर्स की हेल्प होने वाली है। तो अफगानिस्तान के पास दोस्तों सब के सब अच्छे स्पिनर हैं, मतलब अफगानिस्तान की टीम के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान की फास्ट बॉलिंग कमज़ोर है, जबकि स्पिनर्स अच्छी है। लेकिन दोस्तों पिच जो है वो फास्ट बॉलिंग की हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है, मतलब मिचेल स्टार्क को काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इस पिच के ऊपर हेल्प मिलती हुई दिखाई देगी। अगर दोस्तों स्कोर कार्ड की बात कर लें तो इस पिच के ऊपर पहले खेलने वाली टीमें रन्स का पहाड़ खड़ा करती हुई दिखाई दे रही है, मतलब एवरेज स्कोर 300 से ऊपर जाने वाला है, यानी लाठी चार्ज होता हुआ दिखाई देगा। और बाद में खेलने वाली टीमें 206 के करीब दोस्तों रहती हैं। तो इसका मतलब यही हुआ जो भी कप्तान टॉस जीते उसे पहले बैटिंग के लिए जाना चाहिए और आते ही लाठीचार्ज शुरू कर देना चाहिए। तो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का ये मैच इतना अहम है दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए अहम है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है और न्यूजीलैंड के लिए भी बहुत अहम है। तो मतलब जितने भी आगे वाले मैच हैं सब के सब अहम होने वाले हैं। टॉस के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो भी टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेगी वो 54% मैच को जीत लेगी, और जो पहले बॉलिंग करेगी या जिनकी पहले बॉलिंग आएगी वो लगभग 46% मैच को जीतेगी। तो इसका मतलब यही हुआ टॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर चाहे आप जीतें या हारें। तो यही देखना बाकी है कि टॉस होने के बाद कब दोनों ही कप्तान यहाँ पर क्या फैसला करती हैं। हालांकि दोस्तों पिच हमें ये बताती है कि इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलिंग की चलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 निकल कर सामने आ चुकी है। मुझे लगता है दोस्तों पिछले मैच की जो प्लेइंग 11 है उसमें एक आधी चेंज हो सकती है। अगर बात कर लें दोस्तों, डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड यहाँ पर ओपन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तबाहकुन बल्लेबाज हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है। मतलब ये दोस्तों ये देखते नहीं है कौन सा बॉलर है अच्छा स्पिनर है या अच्छा फास्ट बॉलर है, दोनों ही आते ही लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं और किसी भी बॉलर की दुर्घट बना सकते हैं। तो देखना यही है कि क्या डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड को आज अफगानी गेंदबाज जल्दी पकड़ सकेंगे या नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर ये चल गए तो फिर आपको पता है कि 200 के नीचे नहीं रुकने वाले। ट्रेविस हेड की मैं बात करता चलूं, जब ये चलते हैं तो 150 के ऊपर इनका स्ट्राइक रेट होता है, पावर प्ले का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं और आते ही लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों स्टीवन स्मिथ खेलते हुए दिखाई देंगे, कमाल के बल्लेबाज हैं, मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेलती हैं, विकेट को रोकते हैं और रन्स भी चलाते हैं। मार्नुस लबी शाने दोस्तों आज फिर खेलते हुए दिखाई देने वाली हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद इनको बाहर करके शॉन मिचेल मार्श हर मैदान में शेर, ड्यूरोफोम प्राइस चैलेंज के सामने बाकी सारे मैट्रेसेस क्लीन बोल्ड, सबसे ज्यादा खूबियां, सबसे बेहतर कीमत, ड्यूरोफोम। सेमीफाइनल में फिर तो न्यूजीलैंड की भी हालत खराब, पाकिस्तान की भी हालत खराब और अफगानिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अफगानिस्तान फिर नेट रन रेट पे आगे जा सकता है। अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड हार जाए अपना मैच श्रीलंका से, बारिश बहुत है उस दिन, बारिश कब है वो मैच परसों 9 तारीख को। अगर वो हार जाए न्यूजीलैंड वहां पे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी इनकी। अगर पाकिस्तान हार जाए इंग्लैंड से तो फिर डेफिनेटली अफगानिस्तान चली जाएगी। बस अफगानिस्तान को आज का मैच जीतना है। और अफगानिस्तान की पर्सनल खुंदक भी है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने टूर कैंसिल किया था। आपको पता है नवीन उल हक ने भी उनके लिए लिखा था कि भाई तुमने अगर टूर कैंसिल किया था तो अब तुम ये क्यों खेल रहे हो, ये भी छोड़ दो, हमें 2 पॉइंट दे दो। तो देखते हैं कितने गुस्से में अफगानिस्तान के प्लेयर्स भी। और अफगानिस्तान का देखो एक बात तो ये जरूर है कि उनका जो बॉलिंग अटैक है ना, वो अगर चाहे अपने दिन के ऊपर वो किसी भी टीम को हरा सकते हैं, बिल्कुल। बिकॉज नूर के साथ राशिद हालांकि इतनी विकेट्स नहीं ली अभी उन्होंने इस टूर्नामेंट में, इकोनॉमिकल बहुत रहा है, बट राशिद हो गए, नूर हो गए, नबी हो गए, मुजीब हो गए, ये लोग सारे के सारे बड़े खतरनाक है ऑन द गिवन डे। तो ये कर सकते हैं। प्लस इनकी बैटिंग भी पहले से बहुत इंप्रूव हुई है। गुरबत हो गया, तो जादरान है, शाहिदी है, रहमत है, ये सारे के सारे जो है इन्होंने बेटर ही करा है, अपने आप पहले से बेटर करा है। नबी भी बैटिंग कर लेते हैं। सो
नो डाउट दे आर गुड। जैसे कि देखो आप 44 की एवरेज, किसने सोचा था यार कि इनके अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो हैं इतनी अच्छी अच्छी एवरेजेस के साथ खेल रहे होंगे और टफ कंपटीशन, टफ फाइट दे रहे होंगे सारी की सारी टीम्स को। बट लक्षित क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखो 70 की यार उसकी शाहिदी की जो एवरेज है 70 की एवरेज है, 350 है भाई, 350 है। स्ट्राइक रेट चलो 75 की है, लेकिन कम से कम डिलीवर तो कर रहा है हर बार। श्रीशांत ने पता है इनको कितने नंबर दिए? 10 में से 10। नहीं तो यार ये जितनी पुरानी टीम उन्होंने दिए 10 में। आप सुरेश रैना की प्रेडिक्शन देखो। सुरेश रैना बिफोर दिस वर्ल्ड कप सेड, सुरेश रैना ने कहा था कि इस बार मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान पहुंचेगा शायद, लेकिन लड़ेगा ही सबसे ऊपर आके। और अभी अब देखो नीदरलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन चारों से आगे अभी अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी कंफर्म हो चुका है, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका और इंग्लैंड अभी लड़ेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में जाने तो के आप लिए। देखो वो एक्चुअली आगे पाकिस्तान से भी है, बस रन रेट का फर्क है। मैचेस पाकिस्तान से कम खेले उन्होंने और जीते भी बराबर है पाकिस्तान के, तो कायदे में तो वो आगे ही। आप देख लो ना, 8 पाकिस्तान ने खेले, 8 में से 4 वो जीते हैं, अफगानिस्तान ने 7। अफगानिस्तान वैसे तो ऑन पॉइंट्स अगर आप बस नेट रन रेट के बेसिस पे वो लोग पीछे, वरना वो ऊपर ही होते हैं। अब एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर आज अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, चाहे कुछ भी हो, वही डिजर्व करते हैं। फिर तो वही डिजर्व करते हैं कि वो जाए टॉप 4 में। अब नेट रन रेट पे बाहर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर दे कैन बीट ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज मुझे लग रहा है यहां से इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल होने वाला है। जो मैंने पहले बोला था, टूर्नामेंट से पहले मैंने बोल दिया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल, बिकॉज एक टीम जो टक्कर दे सकती है प्रैक्टिकली वो ऑस्ट्रेलिया ही है। बाकी सारी टीम को हमने देख लिया है, साउथ अफ्रीका को हमने देखा है उनका क्या हाल हुआ है, न्यूजीलैंड को हमने देख लिया। वैसे अभी तक जो सबसे क्लोज मैच हुआ इंडिया का, जो 48 ओवर तक, 48वें ओवर तक चला गया था चेस में, 270 कुछ बनाया था न्यूजीलैंड ने, हमने 48 ओवर में चेस किया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बट फिर भी मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के पास इतना फायर पावर नहीं है इंडिया को हराने के लिए। पाकिस्तान तो मैं तो मन्नतें मांग रहा हूं, आपको पता है कि आ जाए एक बार, उनकी सारी हसरतें पूरी कर दें अगर आ जाए सेमीफाइनल में, तो उनका भी मुश्किल लग रहा है। अफगानिस्तान आएगी, अफगानिस्तान भी देखो चलो हमें फाइट दे सकती है, लेकिन वो वाली टीम नहीं कि हरा सकती है। बांग्लादेशी छिछोरे आपने कल देख ही लिया, पूरी दुनिया में मैं बता रहा हूँ छिछोरे पार्ट 2, अगर मैं छिछोरे पार्ट 2 बनाऊं तो बांग्लादेश को खिलाऊंगा मैं, उनके साथ बनाऊंगा छिछोरे। शाकिब होंगे उसके मेन लीड एक्टर, वीडियो भी प्रोवाइड मतलब इन्होंने छिछोरेपन की कोई कसर छोड़ी नहीं है। कभी ये नागिन डांस कर रहे होते हैं, है ना, अपनी कमरे हिला हिला के, वहां पे भी इनको डस लिया जाता है। वो भी आपको याद है फिर निधास ट्रॉफी में जीते नहीं थे। कभी ये शाकिब जी विकेट जैसे बता रहे हैं उठा के फेंक रहे हैं, अंपायर को डरा रहे हैं, और आज कह रहे हैं मैं स्पिरिट ऑफ द गेम में खेलता हूँ। तो कल टाइम आउट कर दिया उसको, तो पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट टाइम आउट किसी को मिला है। तो बांग्लादेशी छिछोरे तो वैसे ही बाहर हो ही चुके हैं। उसके बाद नेदरलैंड है, ये इंग्लैंड वगैरह है, ये सब बाहर ही है, श्रीलंका भी बाहर ही है। तो मेन जो कंपटीशन है वो एक ही टीम है जिसके डीएनए में चैंपियनशिप है, वो है ऑस्ट्रेलिया। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ही आपको टक्कर दे सकती है। पहले होगा, देखो ऑस्ट्रेलिया हार भी गई तो भी कोई फर्क, देखो होगा तो देखो अब ये तो पक्का हो गया ना कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड या इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इसी ऑर्डर में सबसे ज्यादा चांसेस अभी न्यूजीलैंड के हैं, सेकंड नंबर पे अफगानिस्तान के हैं और थर्ड नंबर पे पाकिस्तान के हैं सेमीफाइनल में आने के। तो इन तीनों में से एक से इंडिया भिड़ेगी। अब जो भी होगा इंडिया जीत के आगे जाएगी फाइनल में, और फाइनल में साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो वहां पे मैंने जैसे आपको बोला था कि ऑस्ट्रेलिया, आप बड़ा उस दिन बढ़ के मारा थे कि साउथ अफ्रीका आ जाएगी। अब आपके होश ठिकाने आ गए जो 83 ऑल आउट हुए हो। साउथ अफ्रीका कहा इंडिया के साथ फाइनल में? नहीं, आप बोल रहे थे ना कि फाइनल में आ जाएगी। फाइनल में साउथ अफ्रीका अभी भी पहुंच सकती है। देखो अंडर चेस, अगर आप ऐसी बीमार है, अगर लक्षित यहीं से आपको फ्लाइंग किक लगा दे तो कैसा लगेगा? लक्षित फ्लाइंग किक नहीं लगाया। 9 विकेट पे वो पाकिस्तान से हारने वाले थे, नेदरलैंड से वो हार चुके। इंडिया साउथ अफ्रीका हुआ 83 रन पे, हमने उनका काम तमाम कर दिया। सिर्फ आप साउथ अफ्रीका को मत देखो, इंडियन टीम के सामने तो जितनी भी टीम में आई है सबका हश्र यही हुआ है ना। नहीं, इतनी बुरी तरह तो भाई कोई भी बड़ी टीम इतनी बुरी तरह नहीं। एशिया कप छुपा लें, एशिया कप छुपा लें हम ऐसे ही। बड़ी टीम जो थी उसको हमने इस तरीके से नहीं हराया था। बट अभी भी अगर साउथ अफ्रीका को आप देखें, ठीक है जो मर्जी कह ले, हमारी बॉलिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग चल रही है, कोई लेवल में नहीं है। बट जब चेज में साउथ अफ्रीका आई है उनको डिफिकल्टी हुई है। अगर वो बैटिंग फर्स्ट करते, अभी भी मेरा मानना है कि अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करे तो डिफरेंस हो सकता है। फिर भी अभी भी मैं देखो चांस तो ज्यादा दूंगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और बाकी टीमों से साउथ अफ्रीका को ज्यादा कि वो फाइनल उनके बस की नहीं है इंडियन टीम से। अब देखते हैं कि कौन क्या जाता है। लेकिन अभी फिलहाल मैं
कमाल अफगानिस्तान बहुत ज्यादा कर रहा है। हाँ, तेज अफगानिस्तान नहीं का खेल पा रहा रियलिस्टिक हूँ, चांस पिच है कोई मेरी लगता है? रियलिस्टिक थोड़ी चांस ऊंची तो है। उनका यहीं पर है, अगर उनके स्पिनर्स जो है वो अर्ली ऑन विकेट्स लेने का काम करे, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में सबसे बड़ा नाम एक स्टीव स्मिथ का आप कहते हैं। स्टीव स्मिथ का जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा गिर जाता है जब उनके सामने स्पिनर्स आते हैं, और इस पूरे वर्ल्ड कप में ही स्टीव स्मिथ को सिर्फ 188 स्पिनर्स रन ने बनाए सिर्फ स्पिनर्स ने ही जो है वो स्टीव स्मिथ को बहुत ज्यादा फंसाया है। आदिल रशीद की आप बात करें, इंग्लैंड वाले मैच में अभी स्टीव स्मिथ को उन्होंने विकेट लिया उनका। आप इंडिया वाले मैच में बात करें तो जडेजा ने उनका विकेट लिया था। एको लिख रहे हैं लोग, एको लिख रहे हैं, स्पीकर अगर ऑन करा है बंद करो। एंड ऑलमोस्ट ऑन मेनी ओकेजन्स आप यही देखते हैं कि किस तरह से आपके लिए जो आपके स्पिनर्स हैं वो एक काफी अच्छा काम कर सकते हैं अफगानिस्तान के लिए, बिकॉज उनके पास वहां पर आप देखें तो राशिद खान का एक नाम आ जाता है आपके लिए, वहां पर बाकी जितने भी नाम आ जाते हैं वो एक बेहतर ये काम है कि स्पिन बतौर स्पिन अटैक वो अटैक कर सकता है, उसके अलावा कुछ और खास नहीं है। नहीं देखो यार, अफगानिस्तान का जीतने का चांस देखो, बॉलिंग तो उनकी है ही बढ़िया, लेकिन जिस तरीके से बैटिंग क्लिक कर रही है अभी भी मेरे को लगता है, देखो पाकिस्तान को बहुत बढ़िया उन्होंने खेला, उसके अलावा देखो इंग्लैंड की बैटिंग के अगेंस्ट उन्होंने अच्छी एको देख लो, बार बार लोग एको लिख रहे हैं, एको देख लो बॉलिंग की। बट अभी भी एक चीज और है कि क्या ये लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के अगेंस्ट ऐसी बैटिंग कर पाएंगे जब सामने स्टार्क है, जब हेजलवुड है, या आप देख लो पैट कमिंस। हालांकि इनका भी वर्ल्ड कप सारे लोगों का ऑर्डिनरी ही जा रहा है, लेकिन कोई ना कोई आके बीच मोमेंट पे विकेट ले जा रहा है। अब जैसे रहमत अच्छा कर रहे हैं, या नीचे से आके कप्तान शाहिदी हो गए, ओपनर्स हो गए जादरान और आपके गुरबाज, तो ये जो ऑजी पेस अटैक है, ये ऑजी पेस अटैक को कैसे खेलते हैं, क्योंकि आज अल्टीमेट फाइट मुझे लग रही है ऑजी पेस अटैक वर्सेस अफगानिस्तान बैटर्स। क्योंकि देखो स्पिनर्स कर लेंगे, हमें पता है, उधर से भी देख लें आप, वार्नर है, हेड है, स्मिथ है, ये लोग स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन अफगानिस्तान उस पेस को, जो लेथल पेस है, उसे किस तरीके से खेलेगी, वहां पे आपका मैच जो मेरे हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। बट फिर भी मुझे फीलिंग आ रही है अंदर से कि अफगानिस्तान आज बढ़िया खेलेगी, और मुझे तो लग रहा है कि आज जीत भी रहे, अफगानिस्तान आज जीत भी रही है। कमान अफगानिस्तान। देखो जी, ऐसा है कि यहाँ पे आप मेरे ख्याल पीछे बैठ जाए थोड़ी देर, हमें भी बीमार कर देंगे आप। प्रॉब्लम अबे हमें तो अपनी जिंदगी बचानी है। आप जाए 2 का कर दें। नहीं आप निकले, चलिए जाइए, इतने बीमार भी नहीं यहाँ पे, कुरैशी साहब भी बीमार हो जाएंगे अभी। अरोड़ा जी 2 का बता दीजिए आप यहाँ पे आके फ्रेम। कोबरा जी को आप अपनी सहानुभूति दीजिए। निकले आप भाई, टॉस तक क्या, यहाँ पे वायरस को वेट थोड़ी ना करेगा। जाइए आप रेस्ट करिए, कितना वायरस होगा, आप जाइए रेस्ट करिए, इसके ऊपर सैनिटाइजर छिड़क दीजिए, जाएं आप रेस्ट करिए। अरोड़ा जी इधर आके 2 का फ्रेम बना लीजिए, कोबरा जी को आप अलविदा कह दीजिए। तो 8 मिनट में कुछ टॉस होने वाला है। मुझे एक बार ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम दिखा दीजिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी टीम है जो भाई अच्छी होती जा रही है। बिल्कुल, डेविड वार्नर तो ऐसे खेल रहा है कि उसको लग रहा है कि भाई अब हारना ही नहीं है, अरोड़ा जी को हारना ही नहीं है। जैसे इन लोगों का परफॉर्मेंस आ रहा है, भेज दो अरोड़ा जी को, भेज जिस दो। तरह से ये टीम आप देख रहे हैं कि वापस कम बैक कर रही है, इसीलिए आप कहते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना वो चैंपियंस वाला डीएनए होता है। जब ये एक बार जीतना शुरू करते हैं, इनको भी हराना मुश्किल हो जाता है। अब आज वाला मैच शायद काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया की टीम किस तरह से आके टैकल करती है, उनके स्पिनर्स को कैसे खेलेंगे। मेरे हिसाब से जो एक सबसे मेन कॉम्पिटिशन है, दैट विल बी अफगान स्पिनर्स वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बैटर्स। अगर वहां पर कई अफगान स्पिनर्स जीत जाते हैं तो वही एक चांस है जहां पर वो उन्हें आउट एंड आउट प्रेशर में लगा सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा और कोई चांस नहीं है कि आप देखोगे भाई अफगानिस्तान की बैटिंग ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को अटैक कर देगी। आप ये चीज सोच सकते हैं, लेकिन ये चीज होने के चांस बहुत ज्यादा कम है कि उनके बैटर्स जो है वो बॉलर्स को कभी प्रेशर में डाल दे, बिकॉज वहां पर हेजलवुड है, स्टार्क है, पैट कमिंस है। एक अलग तरह का ये एक्सपीरियंस ये टीम अपने साथ लेकर आती है। उसके बाद अगर आप यहाँ से देख लें तो भाई बैटिंग में अफगानिस्तान की टीम ने इस वर्ल्ड कप में आपको बहुत इंप्रेस किया है, लेकिन अभी अगर आप ट्रैक की बात करें, क्या चाह रहे हैं आप? हाँ बोलिए लक्ष्य। अगर अभी आप यहाँ पे ट्रैक की बात करें तो मैदान आज मुंबई का रहने वाला है, और मुंबई का मैदान हमेशा से सुशांत ने हमने देखा ही है कि कितने रन इस ट्रैक पर बनते हैं। हाई बेल्टर है। अगर कहीं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टॉस जीतकर पहले बैटिंग आ गई और ऑस्ट्रेलिया ने इसको भी साफ कर दें, इसको साफ कर देना सर। देखते हैं भाई, देखते हैं कि किस तरीके से होता है। बैटिंग आ गई तो ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से कहीं का नहीं छोड़ेगा, बिकॉज उनके अगर बैटर्स ने कोई किसी का भी दिन हुआ, जैसे उस दिन मार्च और वार्नर का दिन था पाकिस्तान के सामने, कहीं का नहीं छोड़ा था। कोबरा को बोले दवाई खाएं नहीं तो घर जाएं बेचारे, इतनी तबीयत खराब है तो आए क्यों है, वो बेचारे बैठा नहीं जा रहा जी। 6 मैच में ग्लेन मैक्सवेल बोल रहे हैं 196 रन बनाए हैं और 339.20 स्ट्राइक रेट, 148 की अभी देखा भी है। ग्लेन मैक्सवेल नॉकिंग भी कर देते, तो लग रहा है कि आज खेलने वाले हैं, है ना। और सारे बॉलर यहाँ पे शुरू है अफगानिस्तान के, तो मुजीब है उसमें
और नबी को भी देखा हमने, यहाँ पे राशिद नूर दिख रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए सारे के सारे। लेकिन अभी भी ना अफगानिस्तान का एक मैच वो ड्यू है जहाँ पे उनके सारे के सारे स्पिनर आग लगा दें बड़ी टीम के अगेंस्ट, और क्योंकि बैटिंग उनकी बड़ी अच्छी चली है अभी तक। उनका आप देखो ना सुशांत भाई, जो इन्होंने 4 मैचेस जीते हैं, 4 में से सिर्फ एक इंग्लैंड वाला मैच मेरे दिमाग में जहां पर इनको इनकी बॉलिंग ने मैच जितवाया था। हाँ। बाकी पाकिस्तान के सामने जैसे इन्होंने रन चेस कंप्लीट किया, बाकी सब मैचेस में इनकी बैटिंग ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया। बिकॉज आप सोचते नहीं हो कि इनकी बैटिंग वो 250 280 वगैरह रन बना जाएगी, जो बना के गई है इस बार। बॉलर से तो अभी काम किया ही नहीं है। अगर किसी मैच में राशिद ने अभी 7 में 7 विकेट लिए और राशिद इस कैटेगरी के बॉलर नहीं है। मोहम्मद नबी की आप बात करें, वो भी अपने बिल्कुल टॉप फॉर्म पर बैटिंग भी नहीं कर पा रहे, बॉलिंग भी नहीं कर पा रहे, ऑन एंड ऑफ होते। किसी मैच में राशिद ने ज्यादा कर दिया, किसी में आपके लिए मुजीब ने ज्यादा कर दिया, किसी में नबी ने ज्यादा कर दिया। विकी पूछ रहे हैं कि मैक्सवेल है कि नहीं है, भाई नॉकिंग तो कर रहा था वहां पे, बट अभी कंफर्म फील्ड पर ही है, नॉकिंग कर रहा था, तो मोस्ट प्रॉब्ली खेलेगा ही, वरना आया क्यों है। तो लग तो ये रहा कि खेलेगा। तो लेकिन बात वही है भाई, क्या अफगानिस्तान के पास इतनी फायर पावर है कि ये डेविड वॉर्नर और ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ, लाबुशेन, स्टॉइनिस, ये सारे के सारे जो हैं दैत्य, इनको हराने का दम क्या रखती है अफगानिस्तान। भाई उनके स्पिनर्स अगर चले गए, अब उनके देखो स्पिनर जैसे हमारे भी थे, वहाँ पे अश्विन और कुलदीप ने इनको तंग किया था, तो वैसे अगर इनके स्पिनर्स भी इनके पीछे पड़ जाए। अब यह है कि मुंबई का ग्राउंड है, मुंबई के ग्राउंड में रन बड़े हैं, रन पड़ते हैं बड़े, वानखेड़े में आपको रन मिलते हैं। सो डिपेंड यही करता है कि ग्राउंड में क्या होगा। जैसे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर दिखा रहा है 260, बैटिंग फर्स्ट जिन्होंने करी है वो 14 बार जीते हैं, बैटिंग सेकंड 12 बार जीते हैं। बट वानखेड़े में ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल है यार। हालांकि अफगानिस्तान में बहुत प्लेयर्स बहुत खेले हैं यहाँ पे, अफगानिस्तान के प्लेयर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा खेले हैं, वो पॉइंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब अभी देखो ना, अगर कहीं आज का मैच ऑस्ट्रेलिया हार गया सुशांत भाई, तो ऑस्ट्रेलिया की भी थोड़ा सा तो दिक्कत आएगी, बिकॉज फिर उनका आखिरी मैच वो डू और डाई है। अभी ऑस्ट्रेलिया 10 पर है, नीचे से फिर पाकिस्तान भी 10 पर आ सकता है, न्यूजीलैंड भी फिर 10 पर आ सकता है। अगर इन दोनों में से सपोज करो दोनों को ही बड़े मार्जिन से जीत मिल गई, और अगर आज ऑस्ट्रेलिया हार जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो ऑस्ट्रेलिया के चांसेस उसके बाद उस पे आ जाएंगे जो इनका आखिरी मैच है 11 तारीख को वर्सेस बांग्लादेश। हालांकि ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को हर एक हाल में हरा देगा, तभी हम कह रहे हैं कि उनका भी सेमीफाइनल यहाँ से कंफर्म है। बट ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर अपना मैच जीतकर अपना सेमीफाइनल आज ही कंफर्म करना चाहेगा, जबकि वो बातें बांग्लादेश की मैच में ना छोड़े। देखो ऑस्ट्रेलिया इतनी दूर की सोचता ही नहीं है। ऑस्ट्रेलियन टीम की सबसे बड़ी बात यह है कि वो आगे की नहीं देख रहे, उनको हर मैच जीतना है भाई। वो आप गली में करा लो मैच, आप आईपीएल में करवा लो, आप कहीं पे भी करवा लो, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जहां खेल रहा हो, उसको हर मैच जीतना है। ये उनके डीएनए में है, हार उनको बर्दाश्त ही नहीं है। तभी तो मुझे, जब से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही टीम का खतरा लगता है, वो है ऑस्ट्रेलिया। बाकी कोई भी टीम आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑस्ट्रेलियन टीम ही वो टीम है। और कल मैं कुछ पाकिस्तानी दोस्तों को भी देख रहा था, कह रहे पहले ही सर में दर्द हो रहा है, पहले श्रीलंका न्यूजीलैंड वाले मैच की सोचो कि वहां पे श्रीलंका कैसे जीतेगा, मुश्किल है ना भाई। नहीं, अगर बारिश ना होए ढंग से तगड़ी तो उनका चांस नहीं है। फिर ये सोचो कि पाकिस्तान इंग्लैंड को कैसे हराएगा, ठीक है ना, उसके लिए सरदर्द लो। फिर ये सोचो कि अगर आ गए तो पाकिस्तान इंडिया को कैसे हराएगा, और अगर ये सब कुछ चमत्कार हो गया तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल में क्या कर लेगा भाई, जो अहमदाबाद में है, बिकॉज हमेशा वो ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं। क्योंकि एक टीम जो अभी ऑस्ट्रेलिया की दहशत अलग लेवल की है। वही है ना, ऑस्ट्रेलिया की दहशत एक अलग लेवल की। अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात करें तो पाकिस्तान की टीम जिस पूरे टूर्नामेंट में अभी मुश्किल से क्लिक करना शुरू कर रही है, और वो टीम क्या करेगी। लेकिन वहीं पर मैं भी कुछ पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स को सुन रहा था, उनका भी ये कहना था कि ये लोग ना सेमीफाइनल में जब पहुंच जाते हैं तभी एक अलग ही तरह का क्रिकेट खेलते हैं। जो ये अगर नॉकआउट स्टेज पर बहुत खराब खेल रहे थे, अगर ये पहुंच गए सेमीफाइनल फाइनल्स तक, फिर ये ऐसा क्रिकेट खेलेंगे कि ये वहां से वर्ल्ड कप भी जीत कर लाएंगे। इनका एक मोमेंटम ही अलग हो जाता है। अब देखने वाली बात है क्या होता है। लेकिन हाँ, इनके लिए कैलकुलेटर सबसे ज्यादा निकले हुए हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए बहुत सिंपल है, आपको एक अच्छे मार्जिन से मैच जीतना है, पाकिस्तान को बाकियों का भी देखना है। सुपर चैट दिखा दीजिए, टॉस भी होने वाला है, तो आज होपफुली देखते हैं टॉस कौन जीतता है और क्या डिसीजन लेता है। अफगानिस्तान वैसे टॉस जीतती है तो ज्यादातर बॉलिंग लेने के फेवर में रहती है। ड्यू भी एक फैक्टर होगा ना, आज ड्यू सॉलिड आ रही है, कल भी बहुत ज्यादा ड्यू आई है। ड्यू देखना पड़ेगा कितना बड़ा फैक्टर होगा ड्यू। दिखाइए सुपर चैट, दिखा दीजिए, दिखा देना सुपर चैट। बट आज पीछे है कौन, तुषार दिखाइए, तुषार सुपर चैट दिखा दीजिए। मेरे हिसाब से टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही करना चाहिए। अर्पण, सुशांत भाई, पाकिस्तानियों ने सारा एटमॉस्फेयर खराब कर रखा है वर्ल्ड कप का। बंदा सोशल मीडिया नहीं चला सकता शांति से, हर घंटे एक नई कंट्रोवर्सी, कहीं से कुछ भी। हफीज को इतनी दिक्कत है विराट कोहली से। देखिए अर्पण, मैंने कल भी एक स्पेशल वीडियो किया था, मेरा वीडियो वायरल भी हुआ था कि विराट कोहली के जो हेटर्स हैं या जो भी हैं, हफीज भाई तो देखो सही बंदे हैं, कोई टेंशन नहीं है उनसे। लेकिन जो उन्होंने बोला है ना, मेरे ख्याल थोड़ा शॉर्ट साइटेड मुझे लगा। बिकॉज आपको
ग्राउंड की कंडीशन समझनी चाहिए, आपको इंसान की मेहनत समझनी चाहिए, वो मोमेंट समझना चाहिए। एंड वहाँ पे किस तरीके से विराट कोहली ने खेला जब वो मिडिल में थे, वो भी समझना चाहिए कि उन्होंने इनिंग्स को कैसे पेस किया। जिस पिच के ऊपर साउथ अफ्रीका 83 पे ऑल आउट हो गई, वहां पे विराट कोहली अकेले सेंचुरी मार रहे हैं, उसके बाद कुछ भी बोलना। और आप भाई देखो, आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हफीज भाई का देख रहे हैं तो माइकल वॉन का भी ट्वीट देख लेते। माइकल वॉन ने तो सीधा फाड़ के रख दिया ना, उन्होंने तो बोला नॉनसेंस। अब एक इंटरनेशनल क्रिकेटर दूसरे इंटरनेशनल क्रिकेटर को अगर नॉनसेंस लिख रहा है तो फिर क्या बच गया? फिर वो उनकी इज्जत, मैं इसीलिए बोलता हूं हमेशा, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है भाई। बोलना उतना ही चाहिए जितने को आप डिफेंड करने के काबिल रहो। जब 326 हमने मार दिए, 327 मारे थे, 327, 101 जिसमें से विराट कोहली के हैं, पूरी इनिंग उन्होंने चलाई है। एंकर रोल प्ले वहां पे आप कुछ ऐसी बात कर दें जहां पे ऑपोजिशन 83 पे ऑल आउट हो गई है, तो बनता ही नहीं। मेरे को लोग भेज रहे थे, हमारे यहाँ के भी कुछ लोग थे जो दूसरे चैनलों में चले गए हैं, वो भी बोल रहे थे मिड इनिंग्स में कि विराट कोहली ने ये कर दिया वो कर दिया। मैं उनको इधर भी समझाता था भाई, और इनको भी समझाता हूँ हफीज भाई को भी, कि विराट कोहली के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचा करो यार, रियलिटी है, प्लीज। बिकॉज उस इंसान को पता है। हमने तो चलो क्रिकेट नहीं खेली, हम फिर भी एनालिसिस करते हैं, गेम देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, कितने लोगों का इंटरव्यू कर चुके हैं, बड़े सारे प्लेयर्स का, तो हमें अंदाज़ा है, हम अंदाजे से बात करके बोलते हैं। कम से कम भगवान ने इतनी इज्जत रखी हुई है कि जो भी बोलते हैं कम से कम 95-90% सच होता है आगे जाके। उस दिन मैं मिड इनिंग्स में यही बोल रहा था कि भाई जब ये मैच शुरू होगा ना, तो देखना साउथ अफ्रीका की हालत क्या होगी इस पिच के ऊपर, और वही हुआ। बट आप यार, ये बड़ी ज्यादती है कि विराट कोहली के ऊपर कुछ बोल रहे हैं, और हफीज भाई को तो ये था अगर मैच खत्म हो गया उसके बाद आप बोल रहे हो। आई थिंक पाकिस्तान से बहुत ज्यादा कमेंट्स। सुशांत भाई, इस पूरी स्टेटमेंट को ना, अगर आप पैकेज भी किया, इसके ऊपर सुबह हमने स्पोर्ट्स चैनल पे वो भी आप देख सकते हैं, उन्होंने ना विराट वाला पॉइंट रखा, पर मेरे को विराट वाले पॉइंट से तो असहमति है ही है। साथ में उस स्टेटमेंट का पेंड पढ़ो, वो विराट जो होता है ना कि विराट और रोहित की एक राइवलरी है, विराट वर्सेस रोहित, उन्होंने उस चीज को बढ़ावा दिया। क्योंकि वो स्टेटमेंट के एंड में उन्होंने क्या बोला, रोहित शर्मा अपना सेल्फिश होकर नहीं खेलता। रोहित शर्मा भी चाहता, वो भी अपनी सेंचुरी कर लेता, लेकिन रोहित शर्मा टीम के लिए खेलता है, वो अटैकिंग खेलता है। रोहित शर्मा और विराट का ये कर रहे हैं ना, रोहित वर्सेस विराट वाला सीन। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, एक बात विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हफीज भाई इतने बड़े प्लेयर नहीं है कि वो रोहित पे या विराट किसी पे भी बात कर रहे हैं। पहली बात ये है कि इतनी अथॉरिटी से वो बात कर रहे हैं, कोई वसीम अकरम नहीं है। सेकेंड बात यह है कि जो उन्होंने बोला रोहित शर्मा विराट कोहली, फिर रोहित शर्मा की जाके इंग्लैंड के अगेंस्ट इनिंग देखो ना, जो इसी टूर्नामेंट में हुई है, क्या स्ट्राइक रेट रही, क्या किया, एंड में जाके शॉट मार के आउट हो गए। तो विराट एंड तक खड़े रहे, इट्स अ बिग थिंग कि नॉट आउट रहे, जो उनका रोल था, जो उनको गिवन रोल है। और यहाँ पे इन्होंने पिच असेस करी, उन्होंने बोला शुरू में हम मारेंगे, बीच में पिच स्लो होगी, जहाँ पे बॉल इतना टर्न होना शुरू हो गया था, तो विराट एंड तक रहेंगे। और मैं ये भी समझ रहा हूं कि वो बोल रहे हैं भी एंड की 7 बॉलों में नहीं मारा भाई, वो सेंचुरी मान रहे हैं कि वो सेंचुरी के लिए जा रहे हैं। हर प्लेयर करता है ड्रामे, तो तुम लोग ऐसे करते हो जैसे तुमने तो पता नहीं कभी कुछ करा ही नहीं। जब सेंचुरी के इतने करीब हो, आपको पता है आप मैच जीत चुके हो, ही इज ऑल्सो प्रोफेशनल इनफ, ही नोज एवरीथिंग, आप मैच जीत गए ना। अगर तो आप मैच ना जीतते तब आप बात करो। और भाई जिस दिन उस इंसान को हम सबसे ज्यादा समझे, अगर उसको लगेगा ना कि भाई पिच के ऊपर, जैसे आरसीबी का एग्जांपल देता हूं, आरसीबी का जहां पे बारिश हो गई थी, लास्ट लीग मैच था जो हार गए थे गुजरात टाइटन से, उसमें विराट ने 100 बना के सेलिब्रेट ही नहीं करा था, 100 रन मारे, बैट भी ऊपर नहीं करा था, खुशी नहीं हुए, हालांकि अनुष्का वगैरह सब थे वहां पे, उसको पता था कि हम मैच हार सकते हैं। ये वाला मैच आप जीत चुके थे, मैच डेड हो चुका था, 250 पार स्कोर होता है भाई वहां पे, कमेंट्री में बोल रहे हैं लोग 250 पार स्कोर है, 75 रन ऊपर बना चुके हो, साथ में विराट का 100 भी आ गया, क्यों छोड़े भाई? वो अब सेल्फिश हो गया, या तो मैच हार जाओ। 83 पे साउथ अफ्रीका आउट है, तो ये अपना बेवकूफ, मतलब पता नहीं अब मैं क्या बोलूं यार। और हफीज भाई को तो मैं जेन्युइनली रिस्पेक्ट भी करता हूं, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन फिर वही बात बोलूंगा कि जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड हु यू आर टॉकिंग अबाउट। सिर्फ बोलने के लिए कि मैं अपना पॉइंट प्रूव कर लूं कि आप जाके देख लीजिए 7 बॉलों में क्या कर रहे थे, भाई वो कर भी रहे थे तो ही इज टोटली इन कंट्रोल एंड कमांड, एंड यू डोंट नो व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू, एंड यू डोंट नो कि पिच के ऊपर वो कैसे उनकी बैटिंग हो रही थी। फ्रेश लेग्स जो आई हैं वो भाई 5 ओवर से लेकर 45 ओवर तक बंदा क्रीज पे खड़ा रहा। जो फ्रेश लेग्स आई हैं, रविंद्र जडेजा हो, सूर्य कुमार यादव हो, सूर्य भी मारते हुए आउट ही हो गया ना अल्टीमेटली, फिर रविंद्र जडेजा ने लगाए रन, तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते ना। वो आ जाता भाई 5वें ओवर में, देख लेते 45 ओवर तक खड़ा होता तो क्या क्या करता, वो कैसे खेलता।
सो इट्स नॉट फेयर ऑन विराट। एंड हमारे यहाँ के जो एनालिस्ट उनको तो मैं स्पेशली ये बोलता हूँ कि भाई प्लीज सोच समझ के बात करा करें अगर आप विराट के बारे में बात करा करें। बिनाया बोल रहे हैं सुश भाई दुख होता है ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर मीडिया एवरीबडी ब्लेम्ड इट्स स्क्रिप्टेड वर्ल्ड कप, नॉट ओनली पाकिस्तानी प्लेयर बट ऑल्सो पॉपुलर यूट्यूबर। भाई इनको क्या बोले, सही बात, इनको आप क्यों मुंह लगाते हो? हम तो भाई मैं देखो मेरा ट्वीट दिखा देना रॉबिन, सॉरी तुषार, भेजना मेरा ट्वीट एक बार, इसको भेज देना जो वो वाला मैंने लिखा था ना। एक किसी ने मुझे लिखा था कि भाई आपने जो है आप बॉल चेंज कर देते हो, बीसीसीआई के लिए दूसरी बॉल आती है जैसे स्विंग ज्यादा होता है, तो उसमें मैंने पूरा सीक्वेंस लिखा हुआ है कि हम क्या क्या करते हैं, वो दिखा दीजिएगा। तो बिनाया आप क्यों टेंशन ले रहे हैं यार, क्या फर्क पड़ता है? थैंक यू फॉर सेंडिंग सुपर चैट फ्रॉम यूके। बट कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, यही लोग जीत रहे होते तो कुछ बोलते नहीं। पिछला मैच जीते हैं, सेलिब्रेट कर रहे थे, कोई कंप्लेंट नहीं आई उसके बाद। जीतने के बाद कोई कंप्लेंट नहीं आती भाई, हारने के बाद, और एक ही टीम है जो करती है पाकिस्तान, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा। तो हारने के बाद इनकी कंप्लेंट शुरू रहती है, तो टेंशन ना लीजिए। ये देखिए, ये मैंने ट्वीट करा था। मैं आपको जो बिनाया आप पूछ रहे ना, यस मैंने लिखा था, यस वी यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बॉल्स, यस वी चेंज इंटायर पिच मिड इनिंग्स, देन वी चेंज इंटायर आउटफील्ड, उसके बाद वी चेंज ऑपोजिशन विद क्लोन्स हु गेट आउट अंडर 100 रन्स, we spent $10 billion per game on these activities, then we watch you cry and we enjoy also, तो it is totally worth it। मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो इल्जाम लगाते हैं कि भैया गेंद इधर उधर हो गई, क्या हो गया, तो हाँ भैया हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड गेंदे यूज करते हैं, हम इंटायर पिच चेंज कर देते हैं मिड इनिंग्स, हम पिच भी बदल देते हैं, हम आउटफील्ड भी बदल देते हैं, उसके बाद हम ऑपोजिशन के बंदे भी बदल देते हैं, हम क्लोन्स ले आते हैं, वो 100 के नीचे आउट भी हो जाते हैं, और हम $10 बिलियन पर गेम खर्च करते हैं। आप भी कर सकते हैं, कर लीजिए आप, और फिर उसके बाद हम आपको रोते हुए देखते हैं। तो रोते हुए देखो, खुशियां मनाओ, क्या फर्क पड़ता है भाई। आगे आ जाइए, आगे आइए जी। आज के मैच की बात अभी कर रहे थे भाई, जैसे मोहम्मद यूसुफ ने बोला था कि जब पाकिस्तान को कहीं भी जीत की खुशबू आती है तब वो दुनिया की सबसे खतरनाक टीम बन जाती है। इसी वजह से पाकिस्तान के पास आईसीसी के सबसे ज्यादा ट्रॉफीज हैं एंड स्पोर्ट्स का सुपर पावर है। वो मजाक कर रहे हैं अल्परत्री। हाँ भाई सही बात है। मोहम्मद अल्तमश, थैंक यू फॉर सेंडिंग सुपर चैट फ्रॉम यूएस। नहीं अर्पण नत्री, बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई यहाँ पर अफगानिस्तान ने टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग कर रहे हैं, बट चाहिए ये कि कम से कम यहाँ पर 270-80 रन लगाए ताकि ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में डाल सके। और गुरबज और साथ में उनके जादरान, उसके बाद शाहिदी, जितने भी उनके हैं, रहमत शाह वगैरह, सारे बढ़िया हैं, कर सकते हैं जी, कर सकते हैं लोग। और आज एक टीम के अंदर उन्होंने जो टैक्टिकल चेंज कर दिया है अपनी, आज नूर को मौका दे रहे हैं लोग, नूर खेल रहे हैं इन प्लेस ऑफ फाजल फारूकी। मतलब कहीं ना कहीं 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से जो है वो स्पिन के साथ अटैक करने का प्लान अफगानिस्तान लेके जा रहा है, और शायद यही एक प्लान है जिसको बैक भी करेगा अफगानिस्तान की। स्पिनर्स को दूसरे ओवर से लगा देंगे, सिर्फ 2 पेसर्स को लेके जा रहे हैं, एक नवीन उलग, और नवीन उलग के साथ आपके साथ होंगे ऑलराउंडर तेज गेंदबाज आपके अजमतुल अमरजाई। तो यही बात है कि 4 स्पिनर्स को लेकर आना। नूर अहमद को आप एक और मैच दे रहे हो इस वर्ल्ड कप का, वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने, जो शायद पाकिस्तान को भी, अफगानिस्तान को पता होगा, सॉरी अफगानिस्तान भली भांति जानता होगा कि भाई ये मैच जो है वो इनके लिए एक डू और डाई मैच रहने वाला है। अब ये तो यहाँ तो इनका जो इन्होंने अपना गैम्बल खेला है, यहाँ तो ये गैम्बल इनके लिए बिल्कुल श्योर ठीक जाएगा। अगर इनके 4 में से 3 स्पिनर्स भी चल गए ना सुशांत भाई, ये आज ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ी दिक्कत देने वाले हैं ऑब्वियसली। लेकिन पहले तो बैटिंग कर रहे हैं ना, पहले बैटिंग कर रहे हैं, पहले रन बनाने हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 दिखा रहे हैं हम आपको। ट्रेविस है, डेविड वार्नर, साथ में मिच मार्श आ गया है, उसके बाद मार्नस लबुशेन, जॉश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टॉयनेस, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जाम्पा एंड जॉश हेजलवुड। तो भैया सीधी बात यही है कि मिच मार्श भी, स्टीव स्मिथ इज नॉट प्लेइंग। मिच मार्श ये अच्छा ही हो गया, स्टीव स्मिथ को बाहर कर दिया, स्टीव स्मिथ को बाहर कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने, परफेक्ट डिसीजन है। और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम और तगड़ी हो गई है। देखो ये होती है टीम के पीछे जा बेटा, अभी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, ये होती है टीम के आपने अपने बड़े खिलाड़ी को जो नहीं चल पा रहा उसको बाहर बिठा दिया। हालांकि लबुशेन से बेटर तो स्मिथ ही है, लेकिन चलो दोनों का बिठाना था, बिठा दिया। पूरे वर्ल्ड कप में दोनों का ही नहीं बैठ, बट मार्श भी वापस आ चुका है और मैक्सवेल भी वापस आ गया है। अगर आप देखो जॉश हेजलवुड, जैम्पा, स्टार्क, कमिंस, स्टॉयनेस, मैक्सवेल और मार्श वैसे बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रही।
यार अब यही है ना जो आपका एक पिछले वर्ल्ड कप में शायद आपके हार्दिक पांड्या वाला सीन था कि आप अपने प्लेयर को इंजरी से बचाना चाहते हो। रसेश वर्मा बोल रहे हैं आफ्टर वर्ल्ड कप योर स्टोरी ऑन व्हाट हैपेंड विद मनोज या बिल्कुल बताऊंगा भाई, पूरे डिटेल में बताऊंगा कि टेंशन क्यों ले रहे हो आप। लेकिन एक वक्त होता है, एक टाइम होता है हर चीज का। वर्ल्ड कप खत्म होने दीजिए, सारे अपने भाइयों को टेंशन नहीं है, बट मैं आपको सच्चाई आपके सामने रखूंगा जी। वही है कि अब यहाँ पर आज इन्होंने अगर स्टीव स्मिथ को नहीं खिलाया सुशांत, मैं तो ये देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है, बिकॉज फैब 4 का एक नाम जिसका आप पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स में उसका जिक्र करते हैं, अब यही होता है कि उन्होंने बड़े नाम को बैक नहीं किया, उससे बैटिंग हो नहीं रही है, उसको मैं तो पहले ही बाहर कर देता, उसका बनता भी नहीं था, पता नहीं क्यों इतने टाइम उन्होंने क्यों वेस्ट किया है ना। तो स्टीव स्मिथ को बाहर करके तो उन्होंने ठीक ही करा है। रघु सुशांत भाई गुड आफ्टरनून। किसी एक्स पाक प्लेयर ने लगाया नहीं अभी तक विराट पर इल्जाम बैट में स्प्रिंग यूज करने का। भाई वो खुद ही स्प्रिंग पे उछले जा रहे हैं सारे के सारे, उनकी चांदी हो गई मैच जीतकर, बिकॉज इंडिया जीती जा रही है, पाकिस्तान हारी जा रही है, तो सारे इंडियंस उन्हीं को देख रहे हैं। हमारी तारीफें करे जाओ, करो, ऐसे बैठ जाते इंडियन सारे। चलो शुरू हो जाओ, तारीफें करो, तारीफें, चलो अपनी बुराइयां हमारी तारीफें, चलो ये करते हैं इंडियंस। तो कोई नहीं, एंजॉय करो, आगे आइए। थैंक यू रघु, थैंक यू सो मच। आई होप भाई आपने टिकट्स बुक कर ली है टाइगर 3 के लिए। सारे लोग अपनी टिकट्स बुक करो। एडवांस बुकिंग फॉर टाइगर 3 इज नाउ ओपन। 7 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग वैसे हो चुकी है भाई। टाइगर 3 जरूर देखूंगा, लेकिन एक थोड़े जो शाहरुख के फैंस मुझसे खफा हो गए थे, एक लेडी थी, उनका नाम मैं बता देता हूँ, वो काफ़ी खफा हो गई थी कि हमने तुम्हें सपोर्ट किया, स्पोर्ट्सचारी को तुमने सपोर्ट नहीं किया, एजेंडा। देखो मैंने बोला जवान मुझे पसंद नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं एजेंडा है। एजेंडा तब होता है जब आप लगातार किसी बंदे को यही बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं। भाई जब जीरो आई, मेरे पास सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये थी जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तब मैं उन पे करता कि इसकी फिल्म अच्छी नहीं है भाई, खत्म हो गया। जैसे कुछ लोगों ने विराट कोहली के टाइम पे किया था ना, जब 3 साल रन नहीं आ रहे थे तो कुछ लोग शुरू हो गए थे इसकी जगह नहीं बनती, इसकी जगह नहीं बनती। ये होता है एजेंडा। भाई जब जीरो आई, मैं इंडिया टुडे में एडिटर था, पावरफुल पोजीशन में था, मैं कुछ भी लिख सकता था उनके बारे में। मैंने बेस्ट रिव्यू दिया था उनको, 5 में से 4 स्टार्स, बिकॉज मेरे को जीरो पसंद आई थी। जो पिक्चर भाई अच्छी लगती है उसके लिए कभी झूठ नहीं बोलते, हमारी रोजी रोटी है। तो जीरो मुझे पसंद आई, चाहे पूरी दुनिया को पसंद नहीं आई, उसको मैंने अच्छा रिव्यू दिया। मुझे खुद इंडिया टुडे उधर भी बोला कि क्या हो गया तुझे, मैंने नहीं भाई मुझे पसंद आई है तो सपोर्ट किया। मुझे फैन बड़ी पसंद आई थी। मैं ये नहीं देखता बॉक्स ऑफिस पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा, पिक्चर अच्छी लग रही है अच्छा बोलेंगे भाई। फैन में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो पसंद आई। अब मेरे से कितने लोगों ने लड़ाई करी कि तुम यार एजेंडा चलाते हो, तुम सलमान की किसी का भाई किसी की जान देख लो बेकार फिल्म है, राधे देख लो बेकार फिल्म है, बोल रहा हूं मैं तो। लेकिन किसी भी शाहरुख खान फैन ने मुझे ये नहीं बोला कि जवान अच्छी फिल्म थी। सारा काउंटर ये कर रहे हैं कि सलमान की फिल्म देख ले, तू एजेंडा है, तू ये है, तू वो है। भाई आपको खुद को भी पता है कि अच्छी पिक्चर नहीं है, तो मैं क्यों बोलूं अच्छी मूवी है। खैर आपने जो बोला टाइगर 3 करवा लेंगे भाई बुक। आगे आ जाइए, सुपर चैट दिखा दीजिए। देख लेंगे भाई, सुपर चैट दिखा दो आगे। और बट अब इस मैच का हमें ये इंतजार है कि यार अफगानिस्तान आज लड़ता कैसे है, बिकॉज इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर आपकी वो टीमें बांग्लादेश, श्रीलंका, इंग्लैंड, इन टीमों से जहां आपको उम्मीद थी टू सम एक्सटेंट आई विल से पाकिस्तान एज वेल, इन टीमों से आपको उम्मीद थी भाई ये टीमें फाइट करेंगी, लड़ाई करेंगी। संदीप बोल रहे स्मिथ इज सिक नॉट ड्रॉप्ड। हाँ उनको कुछ हुआ था कल परसों, ये भी आया था सामने। हाँ आयुष सिंह कह रहे हैं सुशांत भाई डोंट वरी, मैंने ही सफरिंग फ्रॉम वर्टिगो। वर्टिगो क्या होता है? वर्टिगो होता है भाई वो चक्कर आने लग जाते हैं। अच्छा हाँ जी पढ़ लीजिए, मैं तब तक वो बहन का नाम ढूंढ रहा हूँ। वो देख लीजिए, मैं जरा ग्रुप से पढ़ देता हूँ। पढ़िए ग्रुप में भेज देना भाई सुपर चैट वाली, मेरे स्पेक्स टूट चुके हैं। पढ़ लीजिए। हाँ आयुष सिंह कह रहे सुशांत भाई डोंट वरी, मैंने बटलर को अपने साथ बिठा के और 2 लिटर लगवा के समझा दिया है कि पोर्कियों को हराना। अरे यार क्या कह रहे हैं भाई, आप पढ़े तो ना ऐसी बात। पाकिस्तान पढ़िए आप। हाँ पाकिस्तान को हराना है, और जो उन्होंने कुछ चीज गिफ्ट भी कर दी उन्हें, जरूर भाई। अर्पणा तरी कह रहे हैं सुशांत भाई AI वाला ट्वीट इज अ टाइट स्लैप। भाई नहीं, अगर जो बार बार आप एक ही बात करोगे, चलो हम करवा रहे हैं, कर लो अब जो करना है, अब बोलो क्या करोगे। अच्छा इन्होंने आज ये भी खबर आई थी कि PCB ने रिजवान को बोला कि अपना ट्वीट डिलीट कर लो। अच्छा जो गाजा वाला ट्वीट था। हाँ अब तो क्या, बिकॉज उस टाइम पे उन्होंने किया नहीं, लेकिन उस टाइम पे ICC से प्रेशर आया था कि डिलीट करवाइए आप। उन्होंने PCB ने बोला खुद, लेकिन उन्होंने किया नहीं। चलो ये भी रिजवान की अच्छी बात है कि नहीं किया। नहीं अब एक बार ट्वीट कर ही दिया, पर हाँ तो स्टिक टू इट, क्यों डिलीट करना है? वही है ना, अगर तबाही हो चुकी है तो अब उसको आप अच्छा एक बार कर नहीं सकते। अफगानिस्तान की भी प्लेइंग 11 दिखा दो, लक्ष्य एक बार पढ़िएगा। अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 दिखा दो।
अफगानिस्तान के प्लेइंग में भाई अपना रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हजमतुल्लाह शाहिदी, अजमतुल्लाह उमरजाई हैं, मोहम्मद नबी हैं, इकरम अकीली हैं, रशीद खान है। अब इस टीम की मुजीबुर रहमान भी कुछ हद तक बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। हाँ। तकरीबन अगर आप देखो पहले बैटिंग करते हुए 11 में से टॉप के 9 की इनके पास बल्लेबाजी है, 9 तकरीबन 8 तक चलिए आप कहेंगे, क्योंकि राशिद खान इज गुड बैटर और इकरम अकीली आ रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में आप ये देखिए कि जिन नामों से आपको उम्मीद होती है कि भाई अफगानिस्तान के लिए और कोई नहीं, लेकिन ये लोग रन बनाएंगे, उसमें गुरबाज का एक आप नाम कह सकते थे, आप नबी का नाम कह सकते थे, कुछ हद तक राशिद खान का नाम कह सकते थे। इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले वो बाकी नाम उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे थे आपको, लेकिन अब जब वर्ल्ड कप के आखिरी 2 मैचेस बचे हैं अफगानिस्तान के, जो नाम जिनको आप सबसे ज्यादा बैक करोगे इनके लिए रन बनाने के लिए, उसमें जादरान का नाम, रहमत शाह का नाम, शहीदी का नाम, उमरजाई का नाम, क्योंकि ऑन एंड ऑफ इन चारों ने मिडिल ऑर्डर से जिस तरह रन बनाया ना, जब ये श्रीलंका के सामने मैच जीतते हैं, जब ये अपना मुकाबला जीतते हैं पाकिस्तान के सामने, इन 4 नामों का वो एक कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बेहतर रहा है। ये बताता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट की वो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो रही है, जहां पर बाकी टीमें खराब कर रही है वहां पर ये टीम अब ग्रो करके आ रही है। आज भला अफगानिस्तान मैच हार जाए, बट मुझे ये देखने में मजा आएगा कि अफगानिस्तान फाइट कैसे करता है इस मैच में, इस मैच के चैलेंज को लेता कैसे, कितना इस मैच को ये लोग यहां से क्लोज लेकर जाते हैं, कितना इस मैच में अगर आप देखें कि एंड तक जाता है मैच। बिकॉज मैं जो नहीं चाहता हूं, एक वन साइडेड कंपटीशन नहीं चाहता। सॉरी यार, वो बहन का मिल नहीं रहा, पी से नाम था, सिंह थी, तो सॉरी, शायद मेरे ख्याल सिंह थी, सॉरी मिल नहीं रहा, लेकिन थैंक यू सो मच जी। वीके 1990 बोल रहे हैं, फर्स्ट सुपर चैट भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बोल रहे हैं ग्रेट जॉब स्पोर्ट्स यारी टीम, लव योर कवरेज व्हेन अश्विन आफ्टर मैनकैंडी said a rule is a rule and got superb support. Why everyone is after Shakib Bangladesh when he appealed within the laws? नहीं यार देखो, इसमें विद इन द लॉज वाली बात ही नहीं है। विद इन द लॉज तो ठीक है, विद इन द लॉज होए। अब आप वो आया है और कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई आप एक वो एग्जांपल दे रहे थे, सौरव गांगुली 6 मिनट लेट था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका के कैप्टन कौन थे वो, जो अपने बेचारे रिटायर हो गए अब तो, हाँ स्मिथ। तो साउथ अफ्रीका के कैप्टन ने 6 मिनट लेट होने के बावजूद कोई अपील नहीं करी, कुछ नहीं करा। भाई ठीक है, रूल है, टाइम आउट का रूल है, वो तो चलो एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है बैटर, जब भाग रहा है रन आउट कर दिया, वो तो चलो ठीक मानता हूं मैं, उसको मैं बुरा नहीं मानता, वो सही है विद इन द रूल्स। यहां पर भी बोल रहे हैं 1 मिनट 98 सेकेंड्स हुए थे या कुछ ऐसा, 1 मिनट 55, सॉरी 1 मिनट 55 सेकेंड्स हुए थे। तो उसके बाद उनका हेलमेट का स्ट्रैप निकला, उसने बोला कि भाई मैल फंक्शन हो गया, इक्विपमेंट मैल फंक्शन हो गया, कुछ हो गया, उनको भी देख के आना चाहिए था। लेकिन यार ये 2 मिनट के लिए या बैटर आया है 2-2.5 मिनट के लिए, बड़ी छोटी और अच्छी हरकत लगी मुझे। ठीक है भाई, विद इन द रूल्स तो आप याद रखो, विद इन द रूल्स, विद इन द रूल्स। अब आपको किस लिए याद रखा जाएगा शाकिब को? 2019 वर्ल्ड कप के लिए याद नहीं रखा जाएगा शाकिब को, ये जो छिछोरापन करा उसके लिए याद रखा जाएगा। बड़े लोग विद इन द रूल्स, विद इन द रूल्स, ये तो बड़ी डिप्लोमेटिक और बकवास बात है। विद इन द रूल्स का मैंने अचार डालना है भाई, वो आया कम से कम लड़ने तो 2 खेलो तो सही उसके साथ, विद इन द रूल्स। अब वही है ना यार, आप विद इन द रूल्स थे। अगर मैं मानता कि वो 2 मिनट के बाद ग्राउंड के अंदर एंटर और एक बार वो बंदा पिच पर आकर खड़ा हो चुका है, शाकिब एक्शन लेने के लिए तैयार है, उसने पिच को असेस कर लिया, अपना स्टांस ऑलमोस्ट लेने वाले थे, जैसे ही वो हेलमेट की स्ट्रैप को टाइट करने के देखा वो टूटी हुई है। अब एक बंदा टूटे हुए हेलमेट के साथ खेलेगा, वो क्या बेहतर रहेगा? 101% नहीं। हेलमेट वैसे तो आपकी पूरे क्रिकेट किट का हर एक इक्विपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी के लिए। अब हेलमेट इतना ज्यादा आपके लिए वो एक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट बन जाता है, बिकॉज फिल ह्यूज का हमें एक इंसिडेंट याद आता है हेलमेट के चलते ही, जब उनका डेथ हो गई थी उनकी, तो ऑन ग्राउंड अभी एशिया कप के अंदर नहीं पाकिस्तान के सलमान के नाम लक्षित, मैं कहता हूं उसकी गलती थी, बांग्लादेश के प्लेयर की गलती थी। भाई तू आ रहा, तू पहले हेलमेट चेक करके आ ना। श्रीलंका के प्लेयर की मैथ्यूज की गलती थी भाई, पहले हेलमेट आप चेक करके आओ, वो बात सही है। लेकिन कोई इतनी भी देर नहीं हुई थी यार, 2 मिनट में वो आ गया था। ठीक है, हेलमेट उसने चेंज कराना था तो चेंज कराने दे भाई। अब उसने बोला भी, जाके समझाया भी कि भाई अपील वापस ले ले। अपील ने 2 बार कहा नहीं, ले सकता था ना वो अपील वापस, ले तो यही अंपायर उसको बार-बार जगह कह रहा था भाई अपील वापस लेनी, वो मान नहीं रहा। बांग्लादेशी टीम से ज्यादा छिछोरी कोई टीम ही नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। उधारे बड़े और नाम जिस तरीके से वो नागिन्स बन गए थे, नागिन डांस होना शुरू हो गया था, फिर नागिन डांस हो गया था ना उनके साथ फाइनल में निधास में, जब दिनेश कार्तिक ने लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया था। तो जब तक ये सुधरेंगे नहीं, और अपना शाकिब ने बदतमीजी, ये तमीम वगैरह हुई तो भारी करा ना, क्या हुआ उसमें? इन्होंने अपना वर्ल्ड कप खराब कर लिया ना। तमीम बाहर हो गया, महमदुल्लाह ने एशिया कप, वो एक कहने का बुखार आया था महमदुल्लाह को, शाकिब भी कोई कम नहीं है,
अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खा वो समझता है और ये छिछोरी हरकतें वही कर सकता था। और पहले भी और मैं तो अग्री नहीं करता भाई इससे, मैं तो बिल्कुल अग्री नहीं करता, बिकॉज 30-40 सेकंड की बात है यार, तुम उधर विद इन द रूल और ये वो कर रहे हो। मैंने हर्षा भोगले भाई का भी ट्वीट देखा, ये है वो है ड्रामा। भाई ज्ञान ना पेलो भाई, सबको पता है रूल क्या है। ये रूल ही लिखोगे कि रूल के विद इन द रूल्स था, तो ये तो सबको पता है कि विद इन द रूल्स था, तभी वो आउट हुआ ना, वरना अंपायर आउट क्यों देता। बट रूल से ज्यादा कोई चीज होती है ना कि आप अगर खेलने आए हो तो खेलो। और सुशांत भाई जो 2 मिनट में नहीं आया जी। जो उसके बाद दूसरा इंसिडेंट हुआ कि मैच खत्म होने के बाद श्रीलंकन प्लेयर्स ने बांग्लादेश की टीम के साथ हैंडशेक नहीं किया, ये भी अपने आप में नहीं बनता ही नहीं था, बनता ही नहीं था। क्यों करेंगे वो हैंडशेक, बनता ही नहीं था। ऐसे छिछोरों के साथ तो बिल्कुल नहीं बनता। किस बात का बनता है भाई, बनता ही नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, उन्होंने हैंडशेक नहीं करा। मेंडिस ने भी इसको लेकर कहा कि अगर वो लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो हम लोग भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और आप इसमें ये देखो, श्रीलंका बांग्लादेश जो 2021 के एशिया कप के बाद अपने आप में एक अलग तरह की राइवलरी नहीं बनकर आ रही है, अब ये राइवलरी और ज्यादा बड़ी हो गई है। अभी भी राइवलरी है भाई, अब तो और ज्यादा बढ़ गई, जैसा कल बांग्लादेश ने काम कर दिया। एंजेलो मैथ्यूज कल जब शाकिब अल हसन बैटिंग कर रहा था, मैथ्यूज ने उसको कुछ नहीं बोला, पूरी टीम स्लेज कर रही है शाकिब अल हसन को, आउट का टाइम सबका आता है। और एग्जैक्टली आपको ये चीज देखने को मिलेगी। बट सैडली शायद अगले वर्ल्ड कप में या फिर इसके बाद जो भी कोई ओडीआई क्रिकेट होगा, ये दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के आमने सामने ना ही आए। क्रिकेट आरजे लिख रहे हैं शाकिब लांती जी। तो पैट कमिंस बोल रहे हैं नॉट टू मच वरीड अबाउट द टॉस, वी वुड हैव हैड अ बैट फर्स्ट बट इट्स फाइन। देखो वो भी बैटिंग पहले करते, वेरी गुड बेटा, शाबाश। हाँ, तो वो भी उन्होंने लिखा कि वो भी बैटिंग पहले ही करते। तो देखने वाली बात यह है कि अब किस तरीके से यहाँ पे अफगानिस्तान बैटिंग करती है और कितने रन बना पाती है। तकरीबन 7 मिनट में मैच शुरू है, तब तक आपसे ये उम्मीद है भाई कि निवेद फूड से बेटर हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स ऑर्डर कर लेंगे। और क्रिक रॉकेट की आपको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। टीवी से आपको 8 सेकंड पहले, सॉरी टीवी से 8 सेकंड पहले और ओटीटी से 20 सेकंड पहले आपको स्कोर बता देती है। सबसे फास्ट ऐप है क्रिक रॉकेट की आज इस मैच को stake.com पे भी आप कर सकते हैं। आज इस मैच को शायद काफी गौर से और काफी तवज्जो से हाँ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाले देख रहे होंगे, क्योंकि अगर आज अफगानिस्तान जीत गया तो अपने अपने मैच के साथ इनकी अफगानिस्तान के मैच पे भी नजर रहेगी। और मैच भी उस टीम के सामने है अगला जहां पर इनको सिर्फ टॉस जीतकर पहले कर लेनी है। अच्छा फिर से पढ़ देता हूं, पैट कमिंस ने क्या बोला, नॉट टू मच वरीड अबाउट द टॉस, वी वुड हैव हैड अ बैट फर्स्ट बट इट्स फाइन। 2 changes, Steve struggled in the warm-ups and is going to miss out. Cameron Green misses out as well. Maxwell and Marsh are in. Really happy with the way that we have gone. 5 wins in a row. भाई 5 मैच जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया। सारा यहाँ पे फोकस है इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ये फालतू बांग्लादेश वगैरह, ये जो वो हो गया अपना टाइम आउट वगैरह। बट ये सुबड़ी में घुमड़ी 5 मैच लगातार जीत चुकी है। ये हमने जीते 8 लगातार, बट ऑस्ट्रेलिया भी देख लो 5 लगातार जीत के आ गई है। टीम से डर है सबको। One of the most pleasing things is that we have played 14 guys so far and everyone has done well. सबको खिला दिया, सारे अच्छे कर रहे हैं। Long may that continue. If weather conditions is always a factor, it is a bit cooler than it was a month ago. We will be fine. We've got plenty of bowling options. बोल रहे हैं बहुत सारे plenty of bowling options है, तो टेंशन नहीं होगी, आ जाइए। नहीं, पैट कमिंस का भी कॉन्फिडेंस चल रहा है। हशमतुल्लाह शाहिदी ने बोला we want to bat first. The wicket looks good and now we are hopeful it will seam and spin in the second innings. We have done well chasing, but you also have to look at the opposition and the ground. सचिन तेंदुलकर मिले थे इनसे, उससे उस वजह से भी बड़े सड़के पड़ोसी कि सचिन क्यों मिल रहे हैं इनसे यहाँ पे जाके, हमसे तो मिलने नहीं आए। बड़े लोग यार, अच्छा आप जाके देखे तो सही इनकी हरकतें, देखे तो सही। इरफान पठान ने डांस कर दिया, ये क्यों डांस कर रहा है? सचिन ने मिल लिया, ये क्यों मिल रहा है? मोहम्मद आमिर ने हमसे तो मिलने नहीं आए। मोहम्मद आमिर ने कहा अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया मैं इससे भी बढ़िया डांस करूंगा। भाई उसका दिल तो नहीं कर रहा कि डांस करूं। कोई बात नहीं, ये तो सच है उसकी बातें सुन के। Sachin Tendulkar is a legend of the game. We were excited to see him and learn from him. He had some words for us and we will try to learn from that. We have one change. Fazaluk Farooqi is not playing. Naveen is playing. Naveen ने जिसने वो स्टोरी डाली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसको खिला लिया। चलिए आ जाइए और सुपर चैट दिखा दीजिए। शुरू होने वाला है, होपफुली आज अफगानिस्तान कैन पुट अ गुड फाइट। मोहम्मद अल्तम बोल रहे हैं, ब्रदर सुशांत, लव फ्रॉम यूएसए, इंडिया इज डोमिनेटिंग द फील्ड इन एवरी वे, लव द वे दे आर प्लेइंग, गॉड ब्लेस यू एंड योर टीम। थैंक यू मोहम्मद भाई, थैंक यू फॉर योर काइंड विशेस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेस। कितना लगाएगा अफगानिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? यार 250 से ऊपर लगाना पड़ेगा वरना कोई फायदा नहीं है। 250 से ऊपर कम से कम वही है। 250 भी वो मक्खन यार, वानखेड़े का स्टेडियम है यार, यहाँ पे 300 भी चेज हो जाएगा। इंडिया और श्रीलंका यहाँ पर हुआ था और 55 में श्रीलंका ऑल आउट भी हुआ था। यहाँ पे 300 और हमने कितने मारे थे? हमने
नहीं, श्रीलंका के सामने एग्जैक्टली उन्होंने बनाए थे, लेट मी चेक। 370-80 मार दिए थे। हाँ। रघु बोल रहे हैं भाई, अब मिकी आर्थर ने ये बोला है कि इरफान पठान ने हमें बुलाया नहीं दावत पर और अफगानिस्तान टीम को बुला लिया, इसलिए हम बाहर हो गए। यार अब तो ना इतनी बातें आ गई हैं कि मतलब जो नहीं भी हुआ वो भी अखबार में आ जाएगा। हाँ। अब हवा में क्या कुछ आएगा। एक इनका प्रेडिक्शन वाला चल रहा है, वो कुदरत का निजाम वाला डिजाइन, पता नहीं उसके कितने एडिशन आ चुके हैं, कोई कैसे पहुंचा रहा है, कोई कैसे पहुंचा रहा है, कोई क्या कुछ कर रहा है। चांस है, लेकिन जैसे मैंने बोला सबसे कम चांस है पाकिस्तान का। सर्वेश गौरव बोल रहे हैं, सर्वेश गौरव, इफ बाउंड्री काउंट कैन विन यू वर्ल्ड कप, डोंट BS by spirit of game. Rules are rules. Shakib is correct, boss. No, he is not. I'm sorry. No, he is not. भाई स्पिरिट ऑफ द गेम, अगर एंजेलो मैथ्यूज को मैदान पर अंदर आने से 2 मिनट से ज्यादा लगते मैं भी शायद मान जाता, बट वो मैदान पर आ गया, स्टांस ले लिया, सब कुछ हो गया, हेलमेट की स्ट्रिप टूट गई यार। No, he is not. एक वैसे नहीं ठीक वो इंसान। जो मर्जी हो, बड़ी ओछी और टुच्ची हरकत है, और मैं तो इससे भी अग्री नहीं करता। मैं तो तब से बोल रहा हूँ न्यूजीलैंड जीता है वर्ल्ड कप, चाहे मनाए, खुशियां मना ले इंग्लैंड। मैं तो तब से बोल रहा हूँ कि वो ठीक नहीं था, उसको भी मैंने गलत ही बोला था भाई। बाकी सारे एनालिस्ट अभी भी इंग्लैंड करते हैं, मैं तो तब से बोल रहा हूँ न्यूजीलैंड ही जीती थी, देना नहीं चाहिए था उनको कप। बट चलो ये फालतू के रूल बनाओ, और रूल भी वो चला गया, खत्म हो गया वो रूल उसी वर्ल्ड कप के बाद, बाउंड्री काउंट वाला। तो बताओ कितना बड़ा तमाशा है। बट एनीवे, रूल्स और रूल्स वाली बात नहीं है यहाँ पे। एक आपको खेल तो इंसान ही रहे हैं ना, या तो मशीनों से खिलवा लो फिर। रूल्स और रूल्स भाई, एक ह्यूमन एलिमेंट होता है गेम में हमेशा। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप तो बिल्कुल वही मैट्रिक्स में जा रहे हो फिर, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खिलवा लेना। ऐसा नहीं होता यार, बड़ा घटिया और छिचोरी हरकत थी वो। उमेर अमीन बोल रहे हैं 326 का स्कोर पे भी विराट को सेल्फिश बोल रहे हैं। टीम को पूरे 50 ओवर बैटिंग करवा दी विराट ने, अब क्या जान लोगे बच्चे की। विराट फैन फ्रॉम पाकिस्तान। देखो भाई, जो अक्लमंद आदमी है वो अक्लमंद बात करेगा, जो बेवकूफ आदमी हो बेवकूफ बात करेगा। और अपने आप को ज्यादा बड़े एनालिस्ट दिखाने के लिए फालतू की बाल की खाल निकालने वाले लोग, छिछोरे ऐसे बड़े हैं दुनिया में भाई। हमने तो देखो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने ये नहीं किया कि पहले बुराई कर दी और फिर जब देखा अरे साउथ अफ्रीका 83 पे ऑल आउट हो गई, अरे विराट ग्रेट, विराट द लेजेंड, विराट ये, विराट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, विराट। ये नहीं करा हमने आपको मिड इनिंग्स में बोल दिया था कि ये जो लोग बोल रहे हैं सेल्फिश, वो पागल गधे हैं। रियलिटी है भाई, बिल्कुल सीधा बोला था। आप एक ये चीज देखो ना, आप बिकॉज पिच को अगर आप रीड नहीं कर पा रहे, आप देख ही नहीं। श्रेयस अय्यर जो बंदा अभी भी अपनी टीम में जगह, उसने पिछले मैच में अच्छा खेला, जो स्पिनर के लिए ही लाए हम कि स्पिनर्स को ही टेक ऑन करता है, जब वो स्पिनर के अगेंस्ट 50 की स्ट्राइक रेट भी नहीं चल रही उसकी, इतना स्ट्रगल कर रहा था। वो जो बीच का पीरियड आया था ना, जहां पे विराट और श्रेयस ने संभाला था भाई, वो टफेस्ट बैटिंग कंडीशंस हो गई थी इस पूरे टूर्नामेंट की अभी तक। उससे टफ मैंने नहीं देखी। इतनी टर्न हो रही है, ब्रेक कर रहा है बॉल, स्लो आ रही है बॉल, सिंगल निकालना मुश्किल था यार उस टाइम पे। जब मैं बोल रहा हूं 50 की स्ट्राइक रेट, वो 50 बॉलों पे कोई 27 ऐसे खेल रहा था श्रेयस। मैंने उसी टाइम बोल दिया था भाई ये बड़ी डिफिकल्ट पिच टू बैट ऑन है। और जब विराट का 100 भी आया, मैंने बोला बहुत अच्छा करे ऐसे 100 कंप्लीट कर लिया, और मैच भी हम जीत चुके थे। कमेंट्री में दिनेश कार्तिक बोल रहा है 250 बहुत है भाई, इधर तुम 326 पहुंच गए। उसके बाद भी लोग जबरदस्त अपने आप को ज्यादा बड़ा एनालिस्ट समझाने के लिए और प्रैक्टिकली वो दिखाने के लिए कि जी 7 बॉलों में इतने रन लिए, एंड में इतने रन लिए, कुछ पता है नहीं प्रैक्टिकली उस पिच पे क्या पॉसिबल है। वो लड़का 5वें ओवर में आके 45 ओवर खेल गया, तुमसे वहां पे 2 ओवर ना खेले जाए। हफीज भाई खुद वहां पे खड़े हो तो 2 ओवर नहीं खेल सकते, सच बात है ये। तो क्या बोले भाई। उमेर भाई थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार भेजते हैं विराट के लिए। अर्पणा 3 कह रहे हैं एंजेलो मैथ्यूज इज अ लेजेंड यार, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट टू एवर प्ले द गेम। A world champion 2014 legend like this cannot be disrespected like that, shameful। कल एंजेलो मैथ्यूज ने भी खुद कहा भाई मेरे 15 सालों के करियर में इतना एक खराब लम्हा शायद वो बदतमीजी थी बेसिकली। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई प्लेयर है जो काफी टाइम से खेल भी रहा है, चाहे नहीं भी खेल रहा है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई तो 30 सेकंड उसको और दे देगा तो क्या मौत आ जाएगी कहीं की? क्या सुनामी आ जाएगा क्या? और आपके साथ खुद नहीं हो सकता कि कभी आप हड़बड़ाहट में लेट हो जाओ या थोड़ा सा 30 सेकंड 35 सेकंड ऊपर नीचे। मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूं, सौरव गांगुली 6 मिनट में आए थे, 6 मिनट, 2 मिनट का रूल है, 6 मिनट। तब भी स्मिथ ने, साउथ अफ्रीकन कैप्टन स्मिथ ने 3 मिनट का वो नहीं करा। चलो 3 मिनट का हो, वर्ल्ड कप के लिए 2 मिनट का। साउथ अफ्रीकन कैप्टन ने तब भी अपील नहीं करी या ये नहीं बोला कि टाइम आउट करो या करो। भाई ये थोड़ी सी तो होती है ना लीवे। आप इतना क्रिकेट खेलते हो, किसी दिन हो जाता है 1-2 मिनट का गैप हो जाता है, तो क्या हो गया? आप अपनी अपील वापस ले सकते थे ना। आपको भी याद होगा वो शमी भाई ने वो रन आउट कर दिया था, रोहित शर्मा ने अपील वापस ले ली थी ना, अभी की बात है, थोड़े टाइम पहले की। तो ये तो कैप्टन पे डिपेंड करता है कि कैप्टन की इंटेंशन क्या है।
कैप्टन की इंटेंशन ही छिचोरों वाली होगी, बदतमीजी वाली होगी, तो फिर यही करेगा ना वो शाकिब का पता चल गया कल। बड़ी घटिया हरकत थी यार, आप लोग समझ नहीं पा रहे, वो बड़ी घटिया हरकत थी, नीचा दिखाने के लिए किया उसने, और डिसरिस्पेक्टफुल तो था ही था, बिल्कुल 100% था। बिल्कुल वहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है यार, बिकॉज अगर पूरी क्रिकेट फर्टिलिटी आपके अगेंस्ट जा रही है, उससे पहले भी आपका इतिहास इस तरह से जब अंपायर से आपने बदसलूकी की थी, और अगर कल अंपायर इनके फेवर में डिसीजन ना देते तो शायद शाकिब अल हसन वर्ल्ड कप में भी कुछ कर देते, बिकॉज शाकिब अल हसन अब अपने करियर के एंड में है। अब इसके अंदर एक और शख्स है, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला कि शायद शाकिब अल हसन वो एक शख्स है जिनको शायद क्रिकेट के रूल्स बहुत अच्छे पता है, उसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, बिकॉज ये रूल पता नहीं इनको कहां से याद आ गया। और एक और पूरी दुनिया को पता है रूल भाई। एक और चीज जो इस पूरे वर्ल्ड कप में शाकिब अल हसन ने उजागर की थी, चैंपियंस ट्रॉफी वाला पॉइंट। किसी को याद नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इन्होंने बोला था कि टॉप की 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगी, तो जब वो चीज चर्चा में एक बार दोबारा, शाकिब अल हसन ही वो शख्स थे। ठीक है, चलो जी, ज़ादरान वर्सेस स्टार्क, वाइड। बहुत अच्छी घूमी बॉल, वाइड तो नहीं, अंदर आ गई, घूमी वो बहुत बाहर थी यार। सिंगल आ गया पहली बॉल पे, डॉट। कम से कम मुझे लग रहा है कि इनको 280 से ऊपर शुभांकर लगाना धारीवाल बोल रहे हैं मिस्ड माय सुपर चैट इन द ब्लू कलर। शुभांकर धारीवाल बोल रहे हैं, उनकी सुपर चैट देख लीजिए शुभांकर जी की। शुभांकर कह रहे हैं इंडिया हैड 8 इन अ रो, ऑस्ट्रेलिया हैड मैसिव 34 विंस इन अ रो। भाई वो तो टीम ही अलग लेवल की थी, बट हमारी भी टीम उसी लेवल की जा रही है। अब जा रही है उस लेवल की। ओह बॉलिंग, 2 पेस विकेट है, पहली आपने देखा कैसे बढ़िया मूव की, ये वाली विकेट कीपर तक कैरी भी नहीं की। और ऐसे कीपर कौन है? इंग्लिश, जॉश इंग्लिश। और ऐसे ट्रैक के ऊपर फंस सकती है अफगानिस्तान की टीम, बिकॉज ये ट्रैक हमेशा से हर एक टीम को चैलेंज करता है। बहुत तगड़ी बॉल। जब इंडिया और श्रीलंका का भी मुकाबला हुआ था ना यहाँ पर, तो इंडियन टीम को भी स्टार्ट में वो जो ट्रबल हो रही थी थोड़ी बहुत, और श्रीलंका का तो कुछ हुई नहीं थी बैटिंग उनसे, तो ये शायद अफगानिस्तान के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बस अगर निकाल जाए ना शुरुआत के वो 10-15 ओवर वाला एक फेज, उसके बाद 280 के पार कभी भी चले जाए, बिकॉज सेकंड इनिंग में यहाँ पर बैटिंग और भी ज्यादा मुश्किल होगी। फिर ओह शॉट, ब्यूटी यार, चौका नहीं रुक जाएगा ना। आउटफील्ड आउटफील्ड इतनी तेज नहीं है, उस दिन भी स्लो ही थी यहाँ पे आउटफील्ड। दिल दिल अफगानिस्तान। पर मैच में मजा आएगा भाई। कुछ कमेंट्स लेते हैं साथ में नॉर्मल, भाई आपके जो विचार हैं आप भी व्यक्त कर सकते हैं कल के पूरे इंसिडेंट के ऊपर। सिंगुलैरिटी की सुपर चैट है भाई, वो भी दिखा दीजिए, अभी अभी आई है। माइटी राजू कह रहे हैं सुशांत भाई, व्हाट अबाउट न्यू राइवलरीज डेवलपिंग इन क्रिकेट, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। आई फील इंडिया वर्सेस Bangladesh is going to be very bad blood rivalry which we have seen at lower level under 19 and emerging। भाई वहाँ पर तो हुई थी, फाइनल में लड़ाइयाँ तगड़ी हो गई थी। हाँ शिव प्रसाद कह रहे हैं सुशांत भाई लुकिंग ऑसम, नॉट नोन, कह रहे हैं कि स्टार्क इज नॉट द सेम ही यूज्ड टू बी बिफोर। भाई वही है, विद द टाइम जो भी शायद बॉलर्स होते हैं उनकी क्वालिटी डिग्रेड होती हुई हमें नजर आती है। पेस के लेवल में आप बात करें, बॉडी उतना बेहतर रिएक्ट नहीं कर पाती है। अभी आज सुबह देखिए, और एक और मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि अपना एंडरसन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 41 साल के एंडरसन ने इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाई वो तो पता नहीं अमर आदमी है, वो पता नहीं वो कब तक खेलेगा, वो अलग लेवल का ही बॉलर है, स्पेशली इंग्लैंड में तो वो पागल ही है। सिंगुलैरिटी कह रहे हैं, कम ऑन अफगानिस्तान पावर्ड बाय अटरी बटरी डिलीशियस अबल। जय गांधी बोले सुशांत सर आप किस टीम से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड है? भाई मैं सबसे ज्यादा ऑब्वियसली इंग्लैंड से ही हूँ, बिकॉज उन्होंने तो बिल्कुल फाइट नहीं दिखाई यार। पाकिस्तान भी देखो कम से कम साउथ अफ्रीका वाले मैच में फाइट की है, अभी जीते भी हैं, न्यूजीलैंड वाले गेम में जिगरा दिखाया है, बट इंग्लैंड तो खत्म ही हो गया ना, मामला ही खत्म हो गया। इंग्लैंड का तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में। थोड़ा वो फाइट करते तो टूर्नामेंट में और मजा आता, बट बहुत ऑब्वियस हो गई ना, 3 टीम्स तो पहले ही लॉक हो गई, इंडिया साउथ अफ्रीका एंड भाई है ना। सपोज करो दो ऑस्ट्रेलिया, अभी इंडिया साउथ अफ्रीका पहुंची होती, नंबर 3 और नंबर 4 की पोजीशन के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंग्लैंड लड़ रहा होता, वर्ल्ड कप का और रोमांच पड़ता। हाँ। अभी तो शुक्र मनाओ ये न्यूजीलैंड 4 मैच हार गया। अगर न्यूजीलैंड पिछले 4 में से एक भी मैच जीत गया होता, आज हमें टॉप 4 पता होती, कंफर्म्ड एंड रेडी। सही फिर बात तो कुछ रह नहीं जाता आगे। सही बात है जी, हार के न्यूजीलैंड मजा दे गया। आगे देखें भाई क्या चल रहा है। सुशांत भाई टेल योर ओपिनियन, हु इज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट?
अभी बड़ा अर्ली टू से, पहले टूर्नामेंट पूरा तो होने दो। असली तो भाई असली मैच तो सेमीफाइनल फाइनल है ना, फिर पता चलेगा। वैसे लीग स्टेजेस में क्या ही बोले, अभी तक के हिसाब से मेरे हिसाब से मोहम्मद शामी अभी ही बोल सकते हैं आप, बोल सकते हैं। काशिफ की सुपर चैट दिखा दो। भी खतरनाक रहा है भाई, दिखाइए सुपर चैट दिखा दीजिए। विराट कोहली भी बहुत खतरनाक रहा है भाई। विराट भी खतरनाक है, बट वो मिड टूर्नामेंट से आना, एकदम से आके आते ही तबाही मचा देना। ठीक है, लेकिन सारे मैच नहीं वो खेले, उसके बावजूद उनकी बहुत विकेट्स हैं, नो डाउट। सुपर चैट दिखा दीजिएगा शरीफ भाई की, दिखा दो भाई सुपर चैट। काशिफ शरीफ बोल रहे हैं, काशिफ शरीफ, अफगानिस्तान has impressed the most here in Asian teams after India. Every single team they played in amazing manner without complaint. Hope they come in semi-final. जी आज है भाई, हम तो चाहते हैं जिस तरह ये खेलना है, बिकॉज जिस तरह भी सुशांत भाई ने यही कहा कि भाई जहाँ पे बाकी टीमों ने आपको इंप्रेस नहीं किया, सेकंड बेस्ट एशियन टीम अभी तक तो अफगानिस्तान ही है भाई इस वर्ल्ड कप में। श्रीलंका नीचे, पाकिस्तान नीचे, बांग्लादेश नीचे, और इस टीम की ग्रोथ बहुत इंप्रेस कर रही है मेरे हिसाब से। अब ये टीम वो हो गई है ना भाई, अब श्रीलंका, वेस्ट इंडीज ये क्वालिफायर लगातार खेल रहे हैं, इनकी क्वालिफिकेशन कंफर्म होती है। इस वर्ल्ड कप में भी क्वालिफिकेशन कंफर्म थी, अगले T20 वर्ल्ड कप में भी कंफर्म है क्वालिफिकेशन। 100% विराट कोहली 50 सेंचुरी मारेंगे, टेंशन ना लीजिए, इसी टूर्नामेंट में मारेंगे 50। मैं तो कहता हूं और रोने वाले और रोएंगे, जलने वाले और जलेंगे, जलाएंगे हम उनको, है ना। उनकी छातियों पे जो सांप लौटते हैं ना, सांपों के, उन्हीं सांपों से डसवाएंगे उनको, टेंशन ना लें। बहुत बढ़िया भाई, आप बताएं। हेजलवुड आ गए, हेजलवुड का भी अच्छा खासा टूर्नामेंट जा रहा है वैसे तो। ब्रेकिंग न्यूज, पिछले दोनों मैचेस में 2-2 विकेट लिए। जिगर कह रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, बाबर 2 किलो आटा चढ़ाते हुए पकड़ा। अरे यार VJ 1990 सुपर चैट दिखा दो। GBS कह रहे हैं इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने के बाद कैप्टन कौन होगा T20 में? अगर जीत गई वर्ल्ड कप तो रोहित शर्मा ही होंगे फिर। अभी तो यही नहीं बिकॉज हार्दिक पांड्या का तो भरोसा ही नहीं है ना। अभी तो यही नहीं पता कि ऑस्ट्रेलियन सीरीज में कैप्टन कौन होगा आपका, बिकॉज सीनियर प्लेयर को रेस्ट देना है। पांड्या इंजर्ड हो गया, स्काई भी रेस्ट करेगा, केएल राहुल सीनियर प्लेयर को रेस्ट देना है। रोहित केएल भी रेस्ट करेगा, कोहली भी रेस्ट करेगा तो फिर उसके बाद टीम ने साउथ अफ्रीका चले जाना है, वहां पे वो लोग चाहिए। VK 1990 बोल रहे हैं विल मिस पांड्या इन नॉकआउट स्टेजेस। एब्सोल्युटली यार, बिकॉज उस शैली का प्लेयर आपके पास नहीं है। नहीं, लेकिन फर्क तो कोई नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा, उससे अच्छा ही हो गया। शमी उससे बेटर ही बॉलिंग कर रहा है और सूर्य भी बैटिंग अच्छी कर रहा है। बट ये है ना कि आपके लिए हार्दिक को जाना छठा ऑप्शन नहीं है, एक में कर देता। जिस दिन आप फंसोगे छठा ऑप्शन नहीं मिलेगा। जिस दिन आपके किसी भी एक बॉलर का डे ऑफ हुआ, फिर आप किसके पास जाओगे वही नहीं पता ना। बट लग नहीं रहा कि इनका कोई लग नहीं रहा है, अगर ऑफ हम कहते हैं ना ही जरूरत पड़ेगी इनको, बट जिस तरीके से ये खेल रहे हैं। सक्षम कह रहे हैं कि किंग कोहली 80 सेंचुरी लोडिंग भाई हो जाए जरूर। इंडिया ऑस्ट्रेलिया अगेन टेस्ट सीरीज जीतेगा, उनका घर पर लगातार 4 बार, वो सीरीज मजेदार होगी। पहले तो मुझे इंतजार है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान में कैसे का परफॉर्मेंस आता है जी। अभी भी काफी लोग कह रहे हैं कोहली की इनिंग सेल्फिश थी। वो तो जान के लिख रहे हैं ताकि आप पढ़ें, उनका नाम ना पढ़िएगा, बस लिखते रहो, कोई बात नहीं। तुम्हें कोई भाव नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई रीच नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई मेंशन नहीं मिलेगा, एंजॉय करो तुम। हाउ डू यू सी गिल वर्सेस रचिन? नॉट नोन कह रहे हैं, आई थिंक लिटिल अर्ली टू से। देखो गिल ने अभी तक परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं दी है इस टूर्नामेंट में, लेकिन एक बार मैं आपको बात बता दूं, ऑल ओवर पूछ रहे हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे दूं। ओवरऑल आप पूछ रहे हैं, अभी तो वो शुरुआत करी रचिन रविंद्रा ने, अभी तो चलो अच्छा खेल रहा है, लेकिन देखते आगे क्या होता है। अभी तो सेमीफाइनल फाइनल आना, तो लेकिन जो मैं बोल रहा था ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे दूं, कल श्रुति जी वापस आ रही है, मैंने बुला लिए, बिकॉज आपकी डिमांड बड़ी चल रही थी कि भैया सेमीफाइनल से पहले पहले आप बुलाओ फिर से। उनकी जो प्रेडिक्शंस थी आपने देखा ज्यादातर सारी सच हो गई है। हार्दिक पांड्या इंजर होगा और खेलते खेलते इंजर हो जाएगा, पैर में लगेगी, वो भी सच। केन विलियमसन इंजर होगा, वो भी सच हो गया। फिर फकर जमान की प्रेडिक्शन करी थी कि सबसे तगड़ा यही है, उसी ने पाकिस्तान को वापस लेके आया हो। विराट कोहली की प्रेडिक्शन करी थी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। इंडिया की प्रेडिक्शन करी थी जीतेंगे पाकिस्तान से, वो भी हो गया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका या इंडिया न्यूजीलैंड का था, ये तीनों भी आ गई। एक श्रीलंका वाली गलत हो गई, बिकॉज शनाका का देख के उन्होंने बोला था शनाका बाहर हो गया। तो बाकी सारी की सारी प्रेडिक्शन, और शुभमन गिल के बारे में उन्होंने बोला था, हालांकि शुभमन गिल इस लेवल पे आया नहीं अभी, तो वो भी पूछेंगे। कल स्पेशल शो एस्ट्रोलॉजी का आपके साथ लेके आएंगे, और सेमीफाइनल से पहले का सब कुछ पूछेंगे, क्या पाकिस्तान आ सकती है सेमीफाइनल में, क्या होगा। और आपको पता है भाई उनकी एक्यूरेसी क्या है, तो दिल थाम के बैठिए कि कल की सितारे क्या बोल रहे हैं ये आपको बताया जाएगा। कल लाइव आपके लिए करेंगे, मेरे ख्याल 12 बजे के आसपास। कल मैच कौन सा है? कल बड़ा मैच है,
बैड न्यूज फॉर इंग्लैंड, हारिस रॉफ रूल्ड आउट। ओ गॉड, नहीं वो मजाक कर रहा है। अगर हारिस रॉफ रूल्ड आउट हो गया तो बोल रहा बैड न्यूज। इंजरी तो है भाई उसको, पर एमआरआई स्कैन ठीक है। कल का मैच वैसे नहीं, कल का मैच अच्छा नहीं है। कल का मैच दुनिया का एक सबसे वो मैच जो अब वर्ल्ड कप में कोई नहीं देखना चाहेगा, इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड्स। दोनों टीमें बाहर हो चुकी हैं यार। हारिस रॉफ बट सही कल में बाहर हो ये- गया क्या? अरे नहीं, लिख रहे हैं लोग। अभी लाइव किया था उसमें, तब तक हारिस रॉफ का जो लेटेस्ट अपडेट था, हारिस रॉफ के रिब केज में इंजरी हुई थी और उसके बाद उनके एमआरआई स्कैन्स हुए। एमआरआई स्कैन्स ठीक आए हैं हारिस रॉफ के, बाकी कंफर्म तो कर जी लेते हैं। कल 12 बजे के आसपास हम लाइव करेंगे एस्ट्रोलॉजर श्रुति के साथ, और सारे के सारे सवाल कि क्या इंडिया सेमीफाइनल किससे खेलेगा, इंडिया जीतेगा नहीं जीतेगा, पाकिस्तान का क्या होगा, क्या पाकिस्तान जीत के अभी भी चांसेस हैं, कुदरत का निज़ाम होने के चांसेस हैं, वो सारी बातें कल करेंगे। कल 12 बजे जस्ट वॉच आउट फॉर लाइव विद द एस्ट्रोलॉजर, जिनकी पहले की सारी प्रेडिक्शंस सही हुई हैं। अच्छी शॉट, क्या ये चौका जाएगा? टाइम इतनी भी ढंग की नहीं हुई थी, बच गया। अच्छी फील्डिंग। हाँ, मटन खाया था सुशांत भाई आज। खाएं आप, खाएं। ये कोबरा को आने नहीं चाहिए था, इसने मुझे भी बीमार कर दिया। अच्छा खासा मैं इतनी मुश्किल से ठीक हुआ था। मैन पावर नहीं आज काम करने के लिए परेशान हो पड़े हम, सभी की तबीयत खराब है। प्रियांशु की तबीयत नहीं नहीं, खराब, उनको चारों बोलो की कि तबीयत ठीक हो खराब गया है। तभी आएगा भाई, वो ज़्यादा तबीयत खराब है उसकी। नहीं, मेरा एस्ट्रोलॉजी शो था ना, प्लान तो आज का ही था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अच्छा चलो कोई नहीं। सारा समीकरण बिठाया था। बिलाल अजहर बोल रहे हैं भाई बिरयानी मटन कढ़ाई निहारी रेडी फॉर यू। यार बिलाल, मेरे को आपकी बहुत याद आई। क्यों लालच दे रहे हैं आप? कहाँ पे? जब मैं, एक तो कोबरा ने फालतू अफवाह फैला दी, मैं स्पा में गया था। वो लॉन्च को स्पा बोलता जा रहा है, पता नहीं 3 दिन से Launch? क्यों। वो स्पा जो एयरपोर्ट पे लॉन्च होता है ना, लाउंज। लॉन्च, वो लॉन्च को स्पा बोलता जा रहा है, पता नहीं क्यों। अरे मैं जो भी है। रात को 2 बजे का टाइम, मुंबई एयरपोर्ट पे अडानी लॉन्च, आप गए होंगे जरूर वहाँ पे। अडानी लॉन्च पे मैं था, तो वहाँ पे जो मेन्यू लगा होता खाने का, सामने थी मटन कढ़ाई। मेरे फोन की बैटरी खत्म थी, आपको वीडियो बना के भेजता है। मज़ेदार लग रही थी, पर अच्छा था लेकिन खाना बहुत प्यारा था। चलो गुड। आप ये देखो, रात को 2:30 बजे की फ्लाइट थी, मैं 12 बजे लॉन्च में एंटर हुआ और लोग सिर्फ 5 पूरे लॉन्च में, हम सब आराम से चिल कर रहे हैं। काफ़ी लिमिटेड कार्ड्स पे एंट्री थी उस लॉन्च पे। देखिए भाई क्या करते हैं लोग यहाँ पे। पर मैं रिकमेंड करूँगा आप जाना ज़रूर, जब अगले बॉम्बे जाओगे उस लॉन्च में, बहुत प्यारा है। पर वो बात आपकी ठीक थी, एयरपोर्ट बहुत बढ़िया वहाँ का, जो अब नया बन चुका है पूरा। ये हमारे एक भाई भी मिले थे बेंगलुरु में, उनको एक अलग ही शिकायत थी वगैरह थी। सुशांत भाई खुद कभी आते नहीं हैं, हम उनसे मिल कैसे सकते हैं यार? अभी तो स्टूडियो से ही करना पड़ रहा है ना। बाकी आया था मैं आरसीबी वाले टाइम पे, तो आया था। वो कहते launch पे। ये भी उन्होंने कहा, मैंने यही कहा, मैं आरसीबी वाले टाइम पे आए थे, कहते वो बता के नहीं आए, उन्होंने बताया नहीं कि आ रहे, हम मिल कैसे सकते थे। जब तक हम आए तब तक चले ही गए वापस। इस बार आईपीएल किया जा सकता है वैसे ऑन ग्राउंड। हाँ आईपीएल, हाँ कोशिश कोई- करेंगे, कोशिश करेंगे। हर venue पे चौका एक-एक आ match। गया देख, ओपनिंग इतनी भी बुरी नहीं हुई है, 3 ओवर में 13 रन है, मतलब ठीक है। विकेट ना दे, बस एंड तक खेले। अफगानिस्तान की बैट, मैच सब कुछ अफगानिस्तान की बैटिंग पर डिपेंड करता है। अगर अच्छी बैटिंग कर दी तो इनके बॉलर्स जिता भी सकते हैं, इनके ऊपर भी प्रेशर आएगा। तो अभी मेरे ख्याल से इजाजत ले लेते हैं आपसे, चलते हैं। इजाजत लेते हैं और फिर जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद। तो अभी इजाजत दीजिए, निवेद फूड से ऑर्डर कर दीजिएगा और आप क्रिक रॉकेट की ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, steak.com को भी विजिट कर लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अभी इजाजत दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ना है तो गिर के फिर उठो। नेस्ले माइलो, जो दे एनर्जी आगे बढ़ने की।
warm welcome to everyone to Ghana and the Providence Stadium for Republic Bank CPL 2023 action. Match number 25 between the home franchise, the Ghana Amazon Warriors, taking on the Jamaica Talawas. The Warriors received a very warm welcome to their homeland. The Talawas, of course, are in possession of this trophy at the moment. They are defending champs. Will they retain it, or will someone else get their hands on it here this season? The coin came down in favor of Imran Tahir, and he elected to field first. Part of his reason, obviously, being the expectant due that could come into play. And for the King, the Jamaica Talawas, they've got some changes with Mackenzie back, Hales is back, Shamar Springer, the former West Indies Under-19 World Cup winner, and Nicholson Gordon is in. No Amir feeling unwell, Blackwood Django and Pittman. Samuel Badri is alongside me to talk you through the Amazon Warriors. Hello Bish, hello everyone. Yeah, just one change for the Amazon Warriors. Matthew Nandu will be making his debut for the franchise and in T20 cricket. He replaces Junior Sinclair. Ayub has been exceptional at the top, particularly post the power play. Shea Hope 2 back-to-back half centuries. Their bowling will be tested on the surface. Gudakesh Modi, man oh man, he defended 6 in that last game. Umpires making their way out to the middle. Umpire Zahid Basrat with the ball in his hand. Patrick Gustard will be his colleague. Atmosphere promises to be quite electric tonight. We've seen some really good crowds throughout this Republic Bank CPL. This team has been well led by Imran Tahir. They've had contributions from different players along the way. The only unbeaten team so far really snatched the victory from the jaws of defeat in their last game against the Barbados Royals. Very important game for Brandon King and his men to try to get back some form. Personally, he knows this ground well. And my Dream 11 picks for this game go to Kishmoti, who was the hero of that previous game. Shimron Hetmeyer understands and knows this ground well, with over 500 runs in CPL here. And Shamar Brooks, it's time to rekindle some of his best form, having scored 100 on this ground last season in the CPL. Brandon King, of course, used to play here for the Amazon Warriors. He averages 47 at this ground, but since those brace of half centuries to start the season, his form has dwindled, and so too the results for the Jamaica Talawas. Alex Hales is back. Yeah, they've struggled in the power play this season. The Jamaica Talawas, Alex Hales will no doubt look to change those fortunes. Lots of experience he brings to the table. Pretorius has done well for Guyana with the new ball. Usually targets the stumps. Looks to bowl that wicket to wicket line. Brandon King, his average at the stadium is exceptional. Can he deliver? Can the Talawas deliver? Or will it be the home team all set for the first ball in the first match in this leg? Can Pretorius find some of that away movement as well? Beautifully crisp from King to start proceedings. Yeah, that really is majestic. Have a look at this, folks. This is the first delivery of the innings. That got met. Raced along the surface. Absolutely regal from the King. Slip in place. A little bit of a waist swing there again, as was the case with the first one, but the length has come back. So critical
at home to see bottom right of your screen a long on in play, as well as a deep backward square leg. And because of that, you've got to be tight onto the stumps most times. Although you've got that slip in place for the away swing and the outside edge. A nice straight line. You are you. तो बाबर है. हर पाकिस्तानी में बाबर जैसी ना रुकने वाली इस पावर को यू फोन कर रहा है. एम्पावर पाकिस्तानी नेटवर्क यू फोन 4G के लिए अनस्टॉपेबल तुम ही दो. Of course, Skyfair odds. Visit the Skyfair website for the best match odds. Go to skyfair.vip. Yeah, there's such a strong correlation for the Jamaica Talawahs when Brandon King scores runs. When they win, he averages 52 and strikes at 150. In losses, he averages only 22 and strikes at 122. So if he scores runs, generally, he does it quickly and his team ends up on the winning side. He, of course, is the third highest run scorer at this venue. Played a number of seasons for the Guyana Amazon Warriors. Third on the list behind Lindell Simmons and Shimron Hetmyer. Four dots following that boundary. Good stop by Azam Khan. Just a wide. Yeah, many CPL fans, Bish, would remember that masterful century he scored here in 2019. 132 unbeaten, which is the highest score in the history of this tournament. Playing that year for the Guyana Amazon Warriors against the then Barbados Tridents. Oh, as he started the over, he has ended the over with that crisp drive. 9 without loss. Yeah, misses his length once again. And he bookends the over with another boundary. Slightly over pitch. Good signs though from the surface. Seems as though it's one where the ball is coming on. A couple changes, well, a number of changes for the Jamaica Talawahs, 4 of them in total. Hales, McKenzie, Springer, Gordon in, and only one for the Warriors as they try to address their woes at the top of the order. Matthew Nandu in for his first game. Romario Shepherd. Couple of Jamaican flags amongst the host of Warrior fans, Warrior Nation present. Still a lot of empty seats that we're hoping will be filled up. Deep point and deep square leg. 2 straight. Nice touch from Alex Hales, his first boundary. Yeah, you can understand what Romario Shepherd is trying. He's trying to finish on the stumps because Hales is very strong square of the wicket, but a little bit too straight. And with the fine leg in the circle, it's always risky
That was risky from Alex Hales. Kimo Paul's run all the way from cover to lend some words of advice to Shepherd and Tahir, and the end result is the slip has come out. Paul himself has now encroached closer at cover. Nikhil was in and amongst the ground staff earlier before the start of play, and they've been working very hard using the orthogonal paints to mark the creases and ensure things are prepared well for this contest. Down but not out. You might just have seamed the back in off the surface. Have a closer look. Uncomfortable position to be hit. And just have missed the padding, the cushioning. It looks as though he has that inner thigh, but it still feels uncomfortable when you're struck there. Yeah, lots of theater and characters in, as you'd expect throughout this tournament in all of the countries that we've visited. Guyana, the land of many waters, no different. Quite a passionate, boisterous, energetic and electric crowd, as always. Lovely touch. Lots of finesse in that for Hales. Yeah, different ways to score your boundaries. There's a deep point, so he knows that he can't power it. So he just uses a bit of dexterity to guide it. Very much in control. Looked at that all the way. "17 without loss, 2 gone." The wait is finally over as I welcome you all to the Lucky shirt? Lucky chair? see who wins the toss. Unlucky Sherry. The best of Or Lays? Quiero conmigo que haya nada negativo, mira vengo positivo y tengo ganas de. Quiero conmigo que fue nada negativo, yo no tengo positivo y tengo ganas de jalar. Paso de la cama, paso de la cama, paso de la cama. मिल गई लेस। अब मैच का मजा आएगा। Pakistan has won the toss and they've elected to bat. "17 without loss." Talawas in search of a couple of wins to try to make the playoff. The facilities look wonderful. Beautified by orthogonal paints, these stands. The other thing to look at and to see how it progresses. One is the dew. It was already starting to form in our build-up to the game. But also the surface is a fairly dry one, and there are a lot of plates. And so we saw a number of deliveries nipping back off the seam, and I'm wondering how long that will maybe be sustained given the plates or plated nature of the surface. Lovely length and away movement.
You're just nibbling at that one. Alex Hales, he scored a boundary in the previous over, just guiding it to third. That time, he was well and truly beaten. That's the sort of length that Pretorius will be searching for with a greater level of consistency. You reflect on the first over by Pretorius, that's a half volley. Then he pulled his length back slightly, kept coming back with his length and bowling a touch straighter, and then finished off with a wide followed by another half volley. But there's certainly some movement off the deck. Yeah, the first bit of real aggression in the innings so far from Alex Hales, looking to go inside out with the anticipated outswing. A decent little start for the Talawas in the Skyfair power play. Spoke about how they've struggled in this phase. We want these two to at least bat them out. Top class, because you go back to the first over and the two half volleys we showed you, that was far and away not a half volley. Struck on the top of the bounce. Creamery Novelties, sweet play from Brandon King. He's so strong through the offside. You can see he gave himself just a little bit of room on the leg side so he can have that free flow of the bat. But you're right, Bish, on top of the bounce. Brilliant. That was a high level of risk in that stroke. 23 without loss. I just wonder if this risk, or this level of risk rather, is called for this early from Brandon King. That so easily he could have gotten him bowled. Either he missed it entirely or played it on. Luckily for him and the JTs, that didn't happen. "18 wickets at 14 of his ground in CPL for Shepherd." Got him, that's number 19. More success for Romario Shepherd, who's been bowling very well. Yeah, an ideal delivery. Oftentimes you have bowlers talking about finishing on the top of the stump, top of off. A little bit of a bottom edge, but the length not short enough for Alex Hales to pull, not full for him to drive. In the end, just chopping it on. He goes for 9 from 10, 23 for 1, the Talawas. Young and talented Kirk McKenzie played the first 4 games, got left out for a couple, and is back. Made his international debut, of course, test match debut. Played first-class cricket this year. Hoping to make a better fist of this opportunity. Another wicket falls for the Jamaica Talawas in the power play. Mario Shepherd, hometown hero, delivering for his team, delivering for his fans. El Dorado celebrations from the big man.
Mackenzie off the mark. The Amazon Warriors looking for one more win to solidify and cement a top 2 finish to the league stage. The Talawas, on the other hand, looking for a couple of wins to cement a top 4 finish, which would mean they're in the playoffs. Imran Tahir has done a very good job leading them so far. Very good from Shepard. Yeah, he's hit Alex Hales there. Previously, he's hit Brandon King. Now, crowds coming in continue to flock this stadium in droves. Really nice to see the people, the fans, the ones who count, coming to the cricket and having a grand time. Little doubt who they are supporting with their flags. Nice. We saw Alex Hales guide one down there before he was dismissed. Now Brandon King just using the pace beautifully. Yeah, just a smidgen of width from Shepard. But very little margin for error outside of some. The players like Brandon King, they'll punish you day in, day out. High percentage of boundaries so far from Brandon King. That was a shot of authority and a hallmark of class about it. A Republic Bank maximum. 34 for 1. Yeah, some Jamaican flags in the stadium as well, outside off stump, and nonchalantly played across the line. Authoritative and disdainful from Brandon King. Kimo Paul, the embodiment of a warrior, an Amazon warrior, hasn't bowled a lot this season. I think just a touch over 6 overs, but he's been batting like a dream. He'll be hoping to make a further statement on the tournament with the ball. Deep point, deep square leg. Of course, if you want to, you can download or scan the QR code and download the CPL chat app. I want to jump on it tonight, actually. I want to download it and jump on it tonight and speak to some of these Amazon Warrior supporters. We'll have an interesting conversation. I'm going to jump on it after I leave commentary. Yeah, they've tried a number of players in this pivotal number 3 position. Jimin Blackwood has been there. And we see this man again, Kurt McKenzie. Shamar Brooks did a magnificent job for them last year when they played here that final leg and all the way to the championship. He had scores of 47 and unbeaten, 109 and another 47. I just wonder if there was any consideration to him batting a 3. Just a push from Mackenzie. Pretorius does the cleaning up and they get a couple. So they perhaps might have spoken about it. And even someone like Imad Wasim, who's been their leading run scorer, I just think that sometimes you give your form players the bulk of the overs to bat, especially if your batting is struggling. Let's see what they can muster tonight.
local boy hero of that last over heist in the previous game. Dream 11 most selected players, Imad Wasim on his batting and all-round form, Shea Hope, Romario Shepherd, Brandon King, and Chris Green, a former Warrior. Captained the franchise as well. Talk about these young local players. Want to give a shout out to some friends of mine, the Hafiz family, of course, at a time like this when the anniversary of September the 11th comes around. Nizam Hafiz, former national Ghanese player, passed away in the World Trade Center bombing. Every year the Maltinos Club are in memory of that. Big hello to the family. Lovely people here in Ghana who've now emigrated. 38 for 1. Smith. Another seam option into the attack for the Amazon Warriors in this Skyfair power play. Heard a lot about spin at Providence. It's been 6 overs of seam so far. Class, absolute class. Darren Gang alongside me, greeted with that stroke. Yeah, brilliant off the back foot. Hello to you, Nikhil. Hello to everyone watching on. This is going to be an intriguing contest. Just standing tall, using the confidence of his earlier stroke play. That's absolutely glorious from Brandon King. I said it will be intriguing because it's two teams that are trending differently, Nikhil. Jamaica Tallawahs with 4 consecutive losses. The Warriors unbeaten so far in this tournament. Yeah, spot on, DG. In terms of the surface so far, it's been a tough one to start for the Tallawahs. When it's been full, King has been happy to drive, but in and around that length, similar length to what we saw Hales be dismissed with, touch maybe of that two-pace nature. Now, if I was Jamaica Tallawahs preparing for this game against the Warriors, I'd know that they only use 5 overs of spin in the power play phase. So as an opening batsman, a top order batter, I'm expecting seam again. I think it was a missed opportunity by Imran Tahir not to start with some spin, maybe the left arm spin of Moti, because Brandon King has been vulnerable to spin. Twice in the last 4 innings, getting out. Extra bounce, but King is just too good. This is some start into the 30s. He loves space on the ball. He's a strong front foot player. He could also play off the back foot and makes it look very easy. Silky smooth he is. Very easy on the eyes, Brandon King. He will have fond memories of playing here. Oftentimes as a player, you come to a venue that you've done well before, just arouses you a bit more. Pressure immediately now for Odin Smith. 2 boundaries in the first 3 deliveries. Interesting as well. King has only taken 1 single. The rest of his runs have come in boundaries, already 7.
He's just timing the ball so immaculately tonight, Brandon King. How good was that stroke? A mere tap through that cover point region. Didn't try to overhit it. The length wasn't a bad length from Odean Smith, so when you can score off good deliveries as a top order batter, you distinguish yourself from the pack. That is what he's doing here, Brandon King. Trouble. Even more problems and trouble for Odean Smith, because not only is it a boundary, it's a free hit. And Brandon King doesn't need that. He's striking at 189. We're hearing it's because they've had an extra fielder outside the circle. Romario Shepherd, standing at square leg, just didn't make it inside past that 30-yard boundary. Regal, absolutely regal from King. He can do no wrong. Yeah, just batting like a man possessed. As was mentioned, his last 4 innings only produced 45 runs. Already 40 from 19. That's how significant the contrast is for Brandon King. He's been struck twice in that cover region, so now Tahir's adjusted deep point into deep cover. And backward square will go out on the onside. So those are the 2 deep fielders. Can King find the boundary again? Just stayed a touch low. Monitor that. Hurdy and Bishop talk about it at the Skyfair pitch check. This man at this stadium. Wow. Remember that final last year? And the Tallowers dominated and lifted the title. Brandon King was instrumental. Really good start for the Tallowers. End of the Skyfair power play, 55 for 1. .17 from that 6th over, ending the Skyfair power play with a bang. The Tallowers, this is what they needed. In desperate need of a win. We've also had 6 overs of seam from the Warriors, and now Captain Imran Tahir takes matters into his own hands. I tell you what, Nikhil, it's the highest Skyfair power play score achieved by the Tallowers this season. That's how good they've been through these first 6 overs. So the Warriors being put under the pump. Slip in place. We know Torganol paint assists us in the middle, but it does many other things as well. You can get your face painting. That is true nationalism. Supporting the country. These Guyanese are passionate. Right, there's a little pattern you can glean from what the Warriors have done in the past. 34 overs of spin in this middle phase of the innings. So watch out, Jamaica Tallowers. They go pace in the power play, spin heavy in the middle, and then more pace at the back end. That's something that should pique the interest of the Tallowers batting. And this man bowls primarily in this middle phase, Imran Tahir. Will bowl a lot of wrong-ons to Brandon King because he's an attacking bowler. He wants to get him out. Mentioned in the last over, DG, in terms of King at this stadium, a couple of hundreds in the CPL, one against the Barbados Tridents back in 2019.
won last season, 104 against this Guyana team right here at Providence. That was in the playoffs, so very good memories. Hit it really well, but Moti does well. It is that bigger boundary to the offside for the left-hander. I know you like your stats, Nikhil. Few other players with 2 centuries in the CPL. Can you name a couple? Nicholas Puran is one. Faf Duplessis, another. Evan Lewis as well. You know, Shimon Hetmeyer has one against this team. 58 for 1. Plus 1 minute. Plus 1 minute. Step in the right direction for this Talos team, who have lost 4 on the bounce. Now Tahir and Moti often work in tandem. We've seen Tahir from one end, it'll be the left arm spinner from the other. Yeah, and I did mention that they achieved something significant in the last game when they allowed Moti to bowl that final over. Only 2 overs in the last 5 he's bowled this season. That's it. Top class, over cover for 6. It's a Republic Bank maximum, and that positive matchup for Mackenzie. He's making that work in his favor. Left arm spin to left-hander. No challenge, no problem from the Jamaican. It was a confident start to this Republic Bank CPL, but then, of course, was on the sidelines for a couple of matches, Kurt Mackenzie. Now he's got his place back. Too easy, way too easy, but backward square in place, got away with it. Lasco Food Drink emergent players. He's a contender, of course. Good to see. Matthew Nandu getting the chance to play the 20-year-old today for the Warriors. That is hit brilliantly well. Just placement. We've seen a lot of power from King. That was just touch. And smart batting as well. As we often say, batting is 80% mental, 20% technique and execution. Recognizing there's a gap at short fine leg and manipulating the field. Now pushing Tahir to plug that gap. Definitely setting down leg. Haven't had too much to shout about the Warriors so far. Odin Smith, oh, he makes a mess of it. It is hit well. Had to judge the bounce as well, but great way to end the over. 73 for 1. And just putting some pressure on Gudakesh Moti straight on. An average effort from Odin Smith in that deep mid-wicket position. 50 partnership between these two. .50 partnership up. Brandon King has done the majority of run scoring, but Mackenzie's been good support. It just a round off the top performers with the bat in this Caribbean Premier League.
Christopher Henry Gale, Dwayne Smith with 4 centuries each, nickel. As was mentioned, Andre Russell, Brandon King, Faf du Plessis, Nicholas Puran with 2 each to their names. Slip in place for Mackenzie as Tahir continues. Yeah, I did. Takes him on, long off, takes it. Success for Tahir, success for the Warriors. And as they've done all season, spin in the middle phase, doing the business in terms of wicket taking, to the joy and delight of the Warriors fans. Mackenzie just trying to get another Republic Bank maximum, ill-advised stroke, you would say, especially when they're on top with a partnership of 50. Gone for 13, 73 for 2. Roll of the dice from the Jamaica Tallowers. Imad Wasim, who's been in unbelievable touch with bat in hand. Seeing the Republic Bank CPI, he's averaged a touch under 50 with a strike rate of 150 in at number 4. Earliest he's batted all season. Samuel Badri called for this. Here he is. And it was against the Warriors when he batted early. It's not about positions, Nikhil. I think it's about the overs that he gets to bat. Entered in the 5th over the last time that these two teams met. And guess what? 63 from 36. That is what he's produced on that occasion. Also think when you have players who are in form, you have to find a way of using it to your advantage as a team. On the other side of that, DG, they do have Shamar Brooks. But this is why Wasim has come to the middle. Mackenzie, the pressure was building, was just going on a run a ball, had to break the shackles in some way. Picked out long off. Now Brooks has scored 100 against this team at this venue, batting at that 4th position, coming in before the 10th over. Interested by that decision? Would you have backed him? 50 for Brandon King. The King has returned to his helm. He loves this venue. Second 50 here at Providence to go with 200s. A Garden Life happiness moment for him and for the Tallowers. His 3rd half-century this season. And a totally different start from the Tallowers with the bat. It's been a special innings from King. Brandon King has spoken immensely about consistency. Even after the most runs last year, he wasn't satisfied. Over to you, Imad Wasim. Challenging. 75 for 2.
Brooks slated to come next. And to answer your question, Nikhil, of course, a question mark over Shamar Brooks and his form. Just under 100 runs so far this season. And you think with Imad Wazim and the type of form that the Talawars have seen from him, it will be that natural option to bat high in the innings. Tremendous effort. Good save. A Bet Barter super save from the young man, Sam Ayub. Yeah, so just staying with that decision, I think it's the right decision. It will offer the Talawars a chance to impact the game earlier, not sort of arrest the crisis with their batting. And then allow for the lower order to play freely. Well ball, well ball. Brooks has shown that he has the propensity to score quickly, so I don't think if he comes in the 13th, 14th, 15th over, he won't be able to strike the ball. He can definitely do so. The homeboy strikes straight through him and Brandon King departs. And this is the same shot that Brandon King played against Salam Keel, that he played against Carmichael, that led to his demise. Once more going for the slug sweep and missing it completely. Such a disappointing way to end such a sparkling innings. Brandon King will reflect on this and feel he could have gotten more. 52 from 32, it's 77 for 3. And it will be an Angostura trill break. Craig's just here though. First match in Guyana of the league stage of this year's Republic Bank CPL. Jamaica Talawars 77 for 3, having just lost a very good looking Brandon King. Boy, has he been in some form. This is the injudicious shot. Been playing so beautifully. Seems a crime that he goes out to a slog sweep. Gudakesh Moti once again coming to the fore for the Guyana Amazon Warriors. Yeah, and you think about the bowling that has been so useful and dominant for the Warriors, unbeaten, and a shame for Jamaica to lose their captain. As you say, he was getting back into some form. He started the tournament so well with that 81, a couple of half centuries and on the slide, and now they've lost 3, and you've got Shamar Brookson to join Ahmad Wasim. Well, we know how good Brandon King feels here at Providence, the success he's had. Well, the same could be said of Shamar Brooks. He will have very good memories of this stadium.
Scored a century here last season. Got his team into the playoffs and they went on to become champions. These are the defending champions, ladies and gents. Forget thee not. Little deft touch there. Imad Wasim wanted the single. Shamar wasn't interested. Successful over for the Amazon Warriors. A wicket and just 4 from it. The halfway stage, the Talawas are 79 for 3. Not a bad start for, well, both teams in a way. Run rate, let's call it 8s. And they've lost 3, and we're halfway through in terms of where they'd like to be at, a bit more the Talawas. They would have loved to have had the skipper still there, of course, but some responsibility now for 2 new batters at the crease, and the very informed Ahmad Wasim has been joined by Shamar Brooks. And what can these 2 Talawas do? On the other end, Odin Smith went for 17 in his first. How can he rebound in front of his home faithful? Well, we're delighted to be back in the land of many waters. Fantastic, extraordinary place. Unique in many ways insofar as it's a Caribbean nation, but in the continent of South America. The Kaicher Falls, one of the wonders of the world. Truly extraordinary. So much to see here in Guyana. Yeah. Kaicher Falls, we were so blessed, weren't we, to go there last year. Absolutely stunning. Awe-inspiring, genuinely. You've never seen anything like it. A lot of laughter as well. We have a wonderful time in Guyana. Love when the CPL comes here. Now, interesting stage of the game we're at here, Danny. Jamaica Talawa fans understand what this game means for them. They've got no more time to play around. Business end, time for the businessmen. Yeah, and when you look at it, it was very similar to last year, where they needed to get up. And here's a nice little straight around the corner for 4. Ahmad Wasim, 3 dots on the trot. They needed this. Yeah, you never underestimate these guys, and what a time of it that Shamar Brooks had, who's just come to join Ahmad Wasim. Just been given some numbers. He got 203 runs at an average of 101 because of his couple of not outs, but he had a strike rate of 176.5. Poof. Last season, yeah, he loved it here. So that's the good news for the Talawas. They've got an in-form Ahmad Wasim and a Shamar Brooks who may find form at a ground he loves so much. 100%, and needs to. I think that's what, you know, players relish. They relish the opportunity to do this. And when you mention that, Alex, at a familiar ground, a familiar environment where they've had success before. Well, I want 1, so it's not a bad thing. Ahmad's going to keep the strike. 5 off the 11th. The Talawas, 84 for 3.
energy of the Caribbean on full display. Check them out. There are no better fans. Certainly a candidate for the CPL fan of the match. TCL voucher, $500 on offer for the best costumes. I know the Guyanese do not play when it comes to their creativity. Their attendance here at Providence. The traffic would have been something this evening as everyone would be bustling from work to make it here for this first match in Guyana in this league stage of the Republic Bank CPL. Yeah, fantastic. Great to see everyone out in their numbers. Oh, it's a, yeah, Chemo Paul, very uncharacteristic for him. You saw slap of the ground, shows his dissatisfaction with missing just the single. Warriors, all the way, Warriors. Let's go. Here's an Angostura chill, refreshing moment. Bit of a calm before the storm. We're going about being in TNT briefly, that very condensed weekend of Trimbago Knight Riders in the sea of red. Well, same here with the yellow and the red and the green. They come out to play here at Providence. Good run. Yeah, great run. But yeah, that's what it's about. You support your team, your colours, and as was it Greenie when you're interviewing him pre-match, calls it the 12th man, the extra, with the crowd. Yeah, he did. Speaking of the pre-match, we heard from Brandon King, who said that he didn't realize they'd never won 5 on the trot. And he said it just means we have to win here. You saw the kind of innings he played. So that will be the mindset of the Taloas, who have gone 11 for 2 in the last 3 overs, mind you. Yeah, because when you think about here, the average first inning score, it's 172. I think, yeah, par on this, and you just wonder, under lights, is the dew a factor, question marks around that, and then will it slide on even better, batting second? It's nice, easy. So good, sensible, intelligent cricket at the moment. Not too many risks, but they will want to start to think about it when you now, well, we've almost had 12, and you're then going to get into 13, 14, 15 and flick the switch somewhat. Mindful, respectful, watchful, 6 from it. 12 gone. Taloas are 90 for 3. Different tales here for the teams. Jamaica Taloas feel like they must win. They're trying to make top 4. Well, the Amazon Warriors, they're in a very reasonably comfortable position. A win here tonight secures a top 2 finish in this league stage. Now, you remember the top 4 teams go into the playoffs, but the top 2 get 2 bites at the apple. So even a better position to be in as a team. Dean Smith continuing his work. Now, good stop, given a wide, and they'll take the single. Yeah, it was a lovely little innings from the skipper, 52 from 32. I just thought he might have gloved this, but yeah, it's wide, nothing on it. A little directed. But yeah, the skipper, he needed to come good with BK. And it was just what they needed to get some sort of score on the board, being asked about first by Imran Tahir. Yeah, he looked ominous, Brandon King, from the first ball. It was an extraordinary cover drive to open his account here this evening. Just having a change here in the field, a little discussion between Chemo Paul and Odin Smith. It's a wonderful team, this Amazon Warriors. These guys are so close. All homegrown.
Yeah, he needs to get runs. Yeah, the very first ball there, and just so Pretorius on a couple of occasions early, just be a little bit too full, but he's so good through the offside, and if you're too straight, well then he'll of course clip you, but such a great offside player, and of course was a Warrior, so he does love this part of the world. Times the ball beautifully. Such a classical player, Brandon King. He was a player of the CPL in 2019 because of all those runs and that 100, beautiful 100. In fact, he's got the highest score here, hasn't he, at this venue? Yeah, it was that 132. I will never forget that night. He was like a wall. He was impenetrable. Oh, he's given that wide. Did swing out. And they'll pick up. Looks like they'll pick up 3 here. A little sloppy from the Amazon Warriors. We'll look at that again. Yeah, it's one of those ones I reckon it swings as it goes past the stumps. So that would have made it doubly difficult for Azim Khan. Sometimes the ball does crazy things. It pitches and then the seam kicks up and then it can be quite upright. So now we've had a couple of wide balls bowled and runs off them. It's a challenge for Odin Smith off a short run, busy, and if he gets that rhythm right, he'll be around for some time. He's so strong. Knock. The land of El Dorado, where are we? You know it. The El Dorado celebrations of the season. Get on the dance floor with the DJ, and I love the stirring here. Hitmeyer, Dom Drakes, everything about it. And then the cartwheeling Sinclairs. They're ready everywhere. Oh, fantastic stuff. We talk a lot about what makes the CPL different from other leagues around the world, Danny, and it's that spirit, it's those celebrations, it's that kind of live wire action. Yeah, that's what it's about, isn't it? They live for it. Players get into those big El Dorado celebrations. Hopefully we'll see more of them as the 100 comes up here for the JTs. But again, I just think of the guys that can do those flips, the Sinclairs, and geez, doesn't Matty Ford get some hang time? Sure do. I love Imran Tahir as well. We saw him sprint a long way today. Priming up for the Olympics in Paris next year. Last ball of the over. 11 from it. 101 for 3. $101 for 3, the Jamaica Tallowers, setting a total here. They were sent into bat by the Guyana Amazon Warriors. First game at Providence. Brandon King, a sparkling half-century. And Imad Wasim and Shamar Brooks currently in the middle, building a little partnership. 24 runs now off 23 balls, consolidating things here for the Jamaicans.
How are you watching us? Where in the world are you? Great to have you along with us at Providence in Guyana for this. This is Gudakesh Moti's last in his spell. Great to have all of you on the Sportsmax app. You can download that Sportsmax app. You can watch the CPL anywhere in the Caribbean region on any of your mobile devices, on the go. Don't miss a moment of this action. It's the biggest party in sport. And so much hot action on the field as well. Yeah, and you come to this part of the world and you get the banners and everyone gets so involved, don't they? And of course, looking forward to tomorrow as well. We've got the Kings up against the Warriors here tomorrow night. And then, of course, the double-header weekend of Saturday and Sunday, big time. Good running, good communication going on in the middle between these two. Elder statesman in the side. Yeah, just got to get on the conch and the carry-on and the shells. Oh, I love it. So good. So much happening in this part of the world. Yeah, well, boy. Just starting to slow down here a bit. For the Talawas, they'll be thinking about how to time this middle phase in order to set themselves up for the last, for the death overs. Yeah, third best, aren't they, in terms of that region of 16 to 20. And they need wickets in hand. It's so key, as ever. .105 for 3. You tell him so, the biggest party in sport, bar none. Well, it's wonderful to be in Guyana, this extraordinary country. So much loves the game of cricket and, of course, such a massive part of the Republic Bank Caribbean Premier League. It's also a quickly growing nation, lots of investment, lots going on. Every time we come, there's so much more to see. Kimo Paul back into the attack. He's from Saxakali in Guyana, in the Essequibo, part Amerindian, extraordinary background, tremendous warrior. If we have a look at the innings timer, shows us that they're well ahead of the rate, which of course matters even more in this year's Republic Bank CPL. New rules. If you're behind the over rate by the 18th, you have to bring fielders in. And if that's still so at the beginning of the 20th, you've got to take them off the field, Danny. Yeah, running repairs from Mario Shepherd. So maybe some new socks on. Feet getting a bit irritated. Yeah, it helps when you've got spinners, don't you? And you look at Tahir, Moti, even Odin Smith. He's off a short run. Kevlon Anderson was just in a bit of no man's land there, not able to catch it, but stops the boundary. A little bit of substitution for Romario, getting his shoes on. Young Shepherd on the right there, Romario's son. Good to see you, son. Oh, a star boy already. He knows how to work the camera. What a gorgeous fella.
Yeah, a little frustration now. Bit of a war of attrition here, getting singles. It's not what they would fancy. The Talawas, they got a good start. They had a good power play, their best of the season, in fact. Time to build on it, as you say, AJ. Time for Brooks to get a wriggle on. He's only going at a run of balls, so 10 balls for 10 is not quite part of the script. Ahmad is he's struggling and trying to hold it together as well, but you can't have two guys holding it together. There's time to go, gents. Do like Romario, get your socks on. Yeah, they're doing well here. The Amazon Warriors squeezing the Talawas a bit. Slowed down this run rate. It's below 8 now, 7.42. You have to imagine the Warriors in front of a Providence Stadium. Gonna need some more firepower than that. How interesting is this? What? I bet this is a fan of the match contender. They are extraordinary. What a wonderful piece of interest here. I tell you what, they know them well. These fans, you talked about Trinidad having fans who love the game. These fans are super knowledgeable, these Guyanese fans. So 5 from the over, 15 gone. The Talawas stagnant at 110 for 3. It's been a dramatic comeback from the Amazon Warriors after what was a scintillating start for the Talawas in that power play. The spinners and Imran Tahir have brought them back in this game, and now as we head into the last 5, it's going back to Pretorius and going back to Seam. Samuel Badger alongside me. Bold. Wicket straight away. It was a long time coming because the pressure was building. Yeah, first ball of his second spell, Pretorius produces the goods. Imad Wazim wasn't really going anywhere, 18 from 26, and he needed to get a move on. Slower delivery, inside the edge, ricochets onto the stumps. And the fans are on their feet, the flags are waving. Imad Wazim is departing the field, 110 for 4. In at number 6 is Raymond Rifa. A mountain to climb for him and his team. It's been slow going in the middle, but we know and we've seen in the past that Rifa has got the ability in this phase to strike out much higher than that 94. Samuel, 55 off the power play, which was 6 overs. In the middle, 9 overs, the same 55 runs. Now just look at how he delivers that slower ball, delivers it wide.
तो जी बहुत बहुत नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग के साथ, जहां पर इस समय की अपडेट सामने आ रही है कि बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन बाहर हो चुके हैं ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से। पिछले 24 घंटे में शाकिब अल हसन काफी ज्यादा चर्चाओं में आए हैं, जहां पर बांग्लादेश की कप्तानी करते हुए शाकिब अल हसन ने कल एंजेलो मैथ्यूज को एक विवादित तरीके से जो है वहां पर टाइम आउट कर दिया गया था। और क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी प्लेयर टाइम आउट के चलते आउट हुआ था। उसके बाद से लेकर शाकिब अल हसन पर अभी तक काफी तरह के सवाल उठाए जा चुके हैं, जहां पर शाकिब अल हसन की स्पिरिट ऑफ द गेम को लेकर भी सवाल उठे हैं। शाकिब अल हसन की कप्तानी को लेकर ऑलरेडी काफी सवाल उठे हैं पूरे वर्ल्ड कप में, और अब शाकिब अल हसन का वर्ल्ड कप को बीच में छोड़ना भी एक बड़ा दिक्कत हो सकता है बांग्लादेश की टीम के लिए, क्योंकि बांग्लादेश की टीम अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ऑफिशियली क्वालीफाई नहीं है। अगर अभी आप पॉइंट टेबल के ऊपर नजर डालेंगे तो नंबर 7 की पोजीशन पर इस समय बांग्लादेश की टीम है, और बांग्लादेश की टीम को अपना आखिरी मुकाबला जीतना काफी जरूरी है अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ऑफिशियली क्वालीफाई करना चाहते हैं। अगर आप अभी नजर डालें तो आईसीसी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए एक आर्टिकल दिया है, जहां पर आईसीसी ने कहा है एन इंजरी टू हिज लेफ्ट इंडेक्स फिंगर हैज ruled Bangladesh skipper Shakib Al Hasan out of ICC Men's Cricket World Cup 2023. Shakib suffered the injury while batting in Bangladesh penultimate. You can see right off screen when the contact is made with the pad, and we'll need ball tracking. Umpire's call. So the umpire thinks that it was hitting, raised his hand, so the decision will be upheld. From Patrick Gustard, you can see that he's pressing his finger against his earpiece because it's that loud out there in the middle. Brooks goes for 10, Nelson strikes for 5. Fabian Allen. Under severe pressure, this Taloas team, not only are they desperate for a win, they're desperate to get to something formidable in the next 4.5 overs. Allen is very capable given that strike rate. He's got 47 against this side early as well. Yeah, this is really good from Pretoria. Saw him early and decided to target the block hole. Just clipping just enough because of the umpire's decision. Was struck for 2 fours, first and last ball of the first over. Amazing. The best fielding team in this competition, and it stops like that. Shea Hope has been electric at cover throughout the tournament. Yeah, and their catching efficiency is the highest of all teams as well. Just look at this commitment in the field. That was traveling. And a bit of teamwork, just parries it to his teammate Kimo Paul. Allen underway, but double strike coming in the over, just 2, critically 2 from it, 112 for 5. Brandon King, the only Taloa batter to strike at over 100. It's been a struggle since that Skyfair power play.
And it's been mainly because of the spin. Imran Tahir has saved 2 overs of himself. I was wondering if he was bold enough to come back. They're already in front the timer, but this will help. Samuel, when you assess that king innings and also the middle phase, that 33 from 36 ball partnership, it was a struggle. Is it the surface, good bowling, or a lack of intent from the batters? He was particularly good in the power play and particularly good against fast bowling, against the pace, as he scored 40 of just 21 deliveries. When the spinners came on, Brandon King slowed down considerably, scored 12 from 11 deliveries. And that's where they were stymied post the 6th over. I think his dismissal and the manner of the dismissal is questionable. The decision to take on Moti and to play that shot, yes, he was stopped, but he knows the importance of his wicket. We spoke at length about the correlation of him scoring runs and victories for the Talawas. And their middle order has struggled. No one has really stood up. There's an over-reliance in this team on Brandon King from a batting standpoint. Yes, Imad Wasim has scored runs. He's their top run getter, but no one else has fired. Nice to see the youngster, Kirk McKenzie, getting a run again, another game, another opportunity. I want to mention another youngster from Jamaica who's making waves in Sri Lanka in the under-19s. Jordan Johnson scored 100 in the youth ODI and 2 centuries in the youth test matches. Again, critical hand on it. I think it's Shea Hope at that straight mid-wicket position, but that could have easily been another boundary. Yeah, Jordan Johnson 105, 149 and an unbeaten 133. So that's a talent to look out for coming from Jamaica. Just over 6 overs without a boundary for the Talawas. 37 deliveries. Brilliant again, and that trend continues. Just 3 from the over, 115 for 5. Head over to Rarea.com, buy official CPL player cards. If you're looking for a player to buy, we are at the Providence. Imran Tahir is a pretty good shout. Not only because of his wrist spin, but he's captain. And for him, you'll be hoping he doesn't have to do too much with bat in hand. Now, 3 overs to go. Can Alan Arifa get them to 150? Have the extra batting option in Shamar Springer today, Samuel. How do these two assess this? And they also have Chris Green to come. Can't take too many deliveries to get going. Arifa has already faced 5 for just 2. Not too many left, so they need to find the boundary, find ways of scoring, perhaps be a little bit inventive. In fact, offside, as you can see in the inner circle, and protection in the deep leg side. He's wrong the wicket, so the angle will go towards the left-hander's leg stump. Tries to go offside, thick outside edge, so this will help. The first boundary in some time. That was a bluff. Pretorius tried to go wide, and that's very fortunate for Rifa. First boundary in 40 deliveries for the Talawas. They need a lot more of that.
Hit it really straight, and it's raced to the boundary. This is much more like it. Game on. Yeah, that was absolutely crunched by Raymond Rifa. Saim Ayub was just a few meters from the ball, but he had no chance whatsoever to get there. That raced across the outfield. Consecutive boundaries after almost 40 deliveries without any. Won't carry. This is where he was so valuable a season ago. It was him, Rifa, and Rodman Powell, supported by Allen. Strikes out close to 150 in this phase. Have to take some sort of risk, and we don't know what's a good score. Of course, it's the first game here. 172 was par score last season for the night matches for teams batting first. Was very cautious in the middle, especially against spin. The Talos have got a lot. He's been very clever with his change-ups throughout this spell. Dwayne Pretorius, another slower delivery, but the length is key. If you bowl these slower deliveries either too short or too full, you can't be punished. Perhaps keeping a touch low as well. So you're right, Nikhil. If they get close to that 150 mark, and with Imad Wasim, Chris Green, Fabian Allen as 3 spin options and their fast bowlers, you just never know. Pure power. Best of the lot, best of the night. A Republic Bank maximum, 131 for 5. Good strike from Fabian Allen. Too full, I just mentioned, the length has to be ideal. That wasn't, and it disappeared. Carnage. A trend when Fabian Allen's in the middle. Thinking for Tahir, Shea Hope, and other senior members to do. They'll have a lot of memories of that match 11. Allen hit it to all parts, 47 from just 23. And that big partnership with Wasim, but they still came up short. And Tahir, to the delight of Samuel Badri, wrist spinner to wrist spinner, is continuing. Yeah, he showed great courage in that last game to bowl Gudakesh Moti the final over, and he's taken the responsibility himself. Penultimate over, this time against the left-handed Reaper. So you'd expect that he bowls predominantly googlies to the left-hander. Fabian Allen smashes the window here at the Providence Stadium. Bang! Destruction. Can smash them a long way. We've seen him before. He's underperformed this season. Imran Tahir 1 wicket away from being the leading wicket taker at this venue in CPL. He's level on 21 with Sunil Narayan and Riyad Emirates. It was there. Allen knows he missed out. It was there, flighted and all. And nice and slow. This is courage. He knows that the batter is trying to get after him. Many bowlers will look to fire it in. Not Imran Tahir on that occasion. Does he change that this time? Allen could be so important, Samuel. Not only for the end of this innings, but I think with ball in hand. Remember, he was player of the match in that final for them a season ago here. Took 3 wickets. He's got 10. But now is time to perform with bat in hand, and he's been smoking it to all parts in the training sessions, but much tougher in a game. Look out for the googly.
If he can close this out, this would be some performance. Not only is he only gone for 11 in the 22 deliveries bowled, but 2 of these overs have come in the last 5. Fabian Allen is on his knees. Another good over. Talking about the 19th over, and he's only conceded 3 with 2 deliveries left. Can he close this over out? Miss badly. You don't miss the Fabian Allen on top of the roof. Yeah, he's impressed. All of the Jamaica Talawas fans are. He smashed the window on the opposite end, went a little bit higher from this end all the way on the roof. That's gigantic. 103 meters from Fabian Allen. A gentle full toss. And I just wonder the impact of the dew as well as we go deeper into the game tonight. That was high and handsome. Chess match. That's another interesting thing, Samuel. The dew, does it help the surface get better? Of course, they've got spin, mainly finger spinners, which is good for the Talawas, but so many factors. Just one. Allen will retain the strike for the final over. 1-4-2 for 5. A small surge to end this first innings of the first match here in Providence, Guyana. So much on the line for the Warriors. 1 win guarantees top 2. For the Talawas, well, they need wins rapidly. Kimo Paul just bowled the 2 overs. No Romario Shepherd. He did see him off earlier, getting some repairs to that left boot. Usually Shepherd bowls 2 up front and then 2 in the back end of the innings, but haven't seen him feature since. Now it's over to you, Paul. And it's the first time this season that Kimo Paul is bowling an over in the back end of the innings in the final 5. So it's a test for him. Another one of those from the class of 2016. That under-19 World Cup winning team. Odin Smith is here. Shimron Hetmyer, Shamar Springer. So 4 of them at least on the park. Oh my word, thought he went all the way. He didn't time it as well as he would have wanted. They're coming back for 2. Allen is fast. 5 deliveries, Samuel. Can they get 160? Well, we shall soon find out in the next couple minutes or so. And interestingly, they're bowling the final over from this, the media center end, the leg side boundary, the shorter of the 2. It's a little thing. When they started from on the players' pavilion end, I thought about it and the fact that they'll need to finish from this end. They're confident enough in their bowlers to negate that bit of advantage for the bowling team, so he'll want them to be scoring offside. Run out chance. I think it struck him as well. Not good, high on the arm. Yes, the fleshy part, he'll be okay. But the direct hit and he would have been gone. Saim Ayub, the man with the throw. All 3 stumps to aim at, misses the bullseye. Saim Ayub will be thinking about his effort with the bat. Has been really good for the Amazon Warriors. A little bit slow in the power play, but he's phenomenal in the middle. Strikes at 200 post the power play. That's remarkable. He's a diminutive figure, but he packs a punch.
It had to go into the pitch. Mid-off is in the circle. And came up all bold with that mid-off up for Allen as well. Trying again, as you said, force both batters to hit into the bigger side and also into the win. Yeah, they're so blessed with so many versatile players, the Guyana Amazon Warriors. Romario Shepherd, like we mentioned before, with bat and ball. Kimo Paul doing the job for the final over. Fabian Allen wants two. He's very quick. Easily gets there. Also have Odin Smith, who's dangerous with the bat, has been good with the ball in parts of this season. Speaking about good with the ball, how good was that man in his career? 405 test wickets to him. Sir Curtly Ambrose, if you're not sure. Yeah, signature reefer on the back foot, over cover, much needed, 150 up. Yeah, they've gone past that 150-run mark with one delivery left in the innings. Maybe trying to bluff the batter, but Raymond Reefer was up to the challenge. Exquisite timing from Raymond Reefer. One delivery left. Can he end with an exclamation mark? Has nailed the Yorker so well. Just one. 152 for 5 is what the Tallowers get to after such a good start. They stuttered in the middle. But 42 from the last 5. The hope is enough. We don't know until we see another team bat on this surface, but the Drew factor, the bigger side, all those in play. Pretorius, Tahir will be overjoyed with the effort, the way they pull things back. And also from a Tallowers perspective, 21 from 14 from Allen could be critical. Yeah, you saw good planning from the Guyana Amazon Warriors in terms of their utilization of resources. All 6 overs in the power play were bowled by the seamers, then the spinners through the middle. Brandon King was sizzling. He was really royal for his 52 from 32, and I think he should have scored many more than that 52, the rate he was going, but not much support from the others. Raymond Reefer and Fabian Allen put together a partnership of 41 from 28, and that got them to 152 for 5 in the allotment. Imran Tahir, the standout. He only got the 1 wicket, but 2 of those 4 were bowled in the last 5. Pretorius chipped in with 2, but they've got so many options. Wicket apiece, sorry, for Morty and Shepherd. Let's go down to Alex Jordan, who's got a special guest. Yeah, I've got Dwayne Pretorius, well bowled tonight, picked up a couple. Can you tell us something about conditions? Yeah, I thought the wicket was quite good with the new ball. It came on nicely. I think we pulled it back really well. They had a great start. I think they had 55 after the power play. So I think we did a really good job to keep them to that total. Well, brand new country, brand new ground. How is it different from Brian Lara? This is probably much louder, probably 30% louder. Really hear you at the moment, I'm reading lips. So no, it's a lot of fun, great being at home. Hopefully we can chase that. I'm sure we can. Our guys are in good form. You've come into a side that has a legacy in this competition. How have you been enjoying it? Very much. These guys are proper people. They're great cricketers, but great people as well. So it's really nice. They've really made me feel welcome, so it's awesome playing for them. 152 on the board. How confident are you? You guys can chase it. Yeah, obviously, I trust our guys. Our batters have been doing a great job. Set the form and then finish it off strong. Thanks for your time. Well bowled tonight. Thank you, Dwayne. Thank you, Alex. He was instrumental in the restriction of the Tallowers, but his batters will have to come to the party. The biggest party in sport. They'll need 153 for a win in front of their home crowd. Don't move a muscle. We'll be back after this.
Brandon King returns to the helm. A superb 50 in a stadium which he loves, his best in the region. Second 50 here at Providence to go with 200s. Majestic. He made it look like a different surface at one stage. Struck at 160, but a good finish from Reefan Allen. 41 from just 28 between those two. Yeah, Brandon King bookended that first over with two majestic boundaries. One hit on the up. He was particularly brutal through the offside, but really good either side of the wicket. He was looking very ominous and perhaps well set for many, many more than he eventually got. And really likes this venue, and you can see where he scores the majority of his runs. Very strong offside, because he likes to stand leg side of the ball to access that region. 31% from point to extra cover. 52 of just 32 deliveries. The bowlers for the Guyana Amazon Warriors, Pretorius, with the new ball. Started off with 2 fours, but then picked up 2 for 33. Showed tremendous skill with his varieties, his slower balls. Shepard picked up 1. Imran Tahir, parsimonious, 1 for 19 from 4. Moti continues to be in and amongst the wicket, 1 for 29 from his 4. You made your picks. Brandon King leading the Dream 11 points so far. Pretorius close from Ariel Shepard. Only bowled the 2 overs, but we could see him with bat in hand. Maybe even Gudakesh Moti, who opened in the last game. The tournament has ventured to the gorgeous Guyana. Boy, does it have a lot to offer. Samuel, what have you enjoyed the most about it? Yeah, the majestic Kaicha Falls. The trip to there is something to behold, and just the majestic nature of that waterfall. It's something that you should experience if you ever have the opportunity. A single drop waterfall, one of the largest in the world. And of course, we talk about the flora and the fauna, the nature, the hills, the rainforests, the friendliness of the people and the local cuisine. The land of many waters, as it is fondly called. Guyana Amazon Warriors, well, they will need 153 of their 20 overs if they are to remain unbeaten in this year's Republic Bank CPL. Stay tuned, we'll be back with the chase momentarily.
Providence, Guyana, and the JTs have posted 152 for 5, their turn at bat. That's what they've posted. And now it's time for the home side to get up. And this man has been in a scintillating touch. Strike rate, very impressive. And in terms of getting after the bowling inside the Sky Fair power play, there's no mucking around from Saim Ayub. On debut, the youngster, Matthew Nandu, a mere 20 years young. First class 100 on debut, I've been told as well. So very exciting, this emerging player gets an opportunity. And we've got a couple of lefties out there. Chris Green. So I've just been told Ahmad Wasim is the stand-in captain because Brandon King he's got a bit of a niggle, a bit of a groin strain, so he's off, and he got struck. That's right, when he's batting, I saw him double over. We're going to get underway very shortly. And the usual suspects in terms of those who start. Chris Green is going to get things underway. Man at square leg on the fence. And a long on. Rightio. Oh, there's that little bit of curve. Keep going, He loves it here. This Chris Green, of course, a former Warrior, knows these conditions, knows this environment. Starts with a goodie. Spot on from Green. Yeah, big inward movement. So he's underway. He's Ayub. So are the Warriors. And as ever, Sky Fair. Visit the Sky Fair website for the best betting odds. And yeah, www.skyfair.vip. Get in there. Ian Bishop alongside. It's exciting. You say this tournament keeps unearthing young talent. That's what it's about, partly, isn't it? And this guy, Nandu. Yeah, given the opportunity, and of course, previous commentators have talked about that 100 that he scored in the Under-19 World Cup in my part of the world, Diego Martin against PNG in the Under-19 World Cup. 100 on debut against Barbados at North Sound in Antigua. So there are high hopes, but this format of the game will be a tester for him, as you know. Let's see how he acquits himself, but great opportunity for him. Yeah, hugely exciting. Really good crowd in the midweeker. A wonderful Wednesday crowd. Up against Chris Green. Signalled wide, just creeps down the leg side, and often Green doesn't give away the stumps. One of those guys. Him and Ahmad Wasim. Those style of bowlers where you look against Multi, where he now tends to rip the ball more. Gudakesh Multi, and gives it a bit more flight and turns it and rips it. But these two, more arm ball bowls. Get a bit of drift, bit of curve. Almost say a bit of swing. Yeah, deep backward square and long on, 2 men out. Once again, spot on. Yeah, concur with you. So Green did this very well, for example, against Sunil Narayan when they played TKR. Bowl over stumps, and you have the protection of those two fielders on the leg side. Maybe the odd ability to bowl the orthodox off spin only as a variation if he's brave enough. Young fella underway, that'll feel really good. Calm the nerves somewhat. Matthew Nandu. The counter to this now, Danny Morrison, is Ayub, who's been sort of about a runner ball in the power play, but of course all his runs that he scored in this tournament, he's very strong on the onside if you bowl straight at him, so that's the risk reward. Yeah, shorter side, 69 metres to that onside, 2 lefties. We've had 1, 4 for none.
Salman Assad. Started off with a hiss and a roar. 4 he got at Warner Park and St Kitts and Nevis. Very tasty that morning. Look at the Pakistan connection, and yeah, Bish. Love these little matchups with countrymen, T20s. It's a handsome looking shot that gets through. Just a little punch downtown, and there is a lovely boundary. It was such a beautiful shot, just waiting for the angle to come into him from around the wicket and hitting. I shouldn't say hitting, he punched it with the angle. Of course, there's no Mohamed Amir today for the Talawas, who's been a master in the power play, so that's where someone else has to fill that breach for the Talawas. Yeah, 100% Bish, and here he is, Salman. Coming round, and look at the timing. Hit that so late, didn't he, under his eyes. The Vista Cam from the Omega XL Sky Cam, providing all these wonderful strokes at this impressive stadium that, of course, was built for the 2007 ICC Men's 50 Over World Cup. Well done, the drone merchants. Get those drones hovering. Great stuff. It's going to come right arm over here to the debutant Nandu. Is Salman. Interesting. He knows his Pakistani countryman, so he came round. Now he's coming over the wicket as Salman. Starts with a good Yorker on target. Yeah, it's such a big opportunity because they've tried Zazai, they've tried Chandapal Hemraj at the top of the order, they even tried Moti last game. The opening partnership has been a problem for the Amazon Warriors. The highest opening partnership this season for them is 32, but the rest of the batting is so strong, it has not affected them at all. Big shout, big shout. Patrick Gustard is not in agreement. Ahmad Wasim, who's skipper out there. Yeah, no one's keen, not even the bowler. They're doing enough with that low arm to swing back, perhaps past leg stump. What he needs to do, Danny, as you know, is maybe to start it middle and off stump. Let it touch down on middle and off. Oh, it'll feel real good here for Nandu. There's that swing that Ian Bishop's on about, but it's way too straight. Picked off. What a nice shot, though. First boundary in Republic Bank CPL for Matthew Nandu. Just using the pace and the angle. Still takes a while for Nandu to get accustomed to that low arm of this man Salman, but he played that so competently. Got it started off stump or middle and off stump. One to go in the second now. Oh, might be a wide, yeah. Confirmation, Mr. Gustard. Yeah, Bish, what you're on about? Tizo insight. The opening stands for the average opening stands. The Kings have been very good. Warriors down the bottom at 12.7. Talawas just about 28. Well, the radar's a little off now. That is most frustrating for the Talawas.
Remember, he started round the wicket, right? And he was punched down the ground by Ayub for 4. So he's gone over the wicket to try to line it up. And still, you can see the shaking of the head there. He would be shaking his head too, although he very rarely did, Sir Curtly Ambrose. Very rarely bowled wides, full stop. Always at you, King Kurt. And he's gone the other way just to push it. And you emphasised a great point earlier, and we have off air as well, that when you get a very low slingy action that comes out there and it's very low on the arc, is that there's a lot more chance for things to go a little haywire. Just get it slightly wrong, whereas you're a bit higher, there's that more control. But of course you get some wonderful swing in that. But we're just seeing the evidence now that if you're slightly off in your timing and your rhythm as a slinger, then this is what can happen. Look at that, 3 wides in a row, 2 down the leg side and 1 on the off. He's just trying to close this over out. It's gone for a dozen. And he decides to go with a slower one, the Solomon. So, yeah, 12 off, 16 for none. Oh, look, I hope so. Steady it'll start this, given that it's Ayub with all of his innings and strike rate, and Matthew Nandu on debut, 20 years young. Very exciting. Here's Ayub up against the green monster. Oh, that is a peach. That's the other one. It just straightens it. You're on about, Bish. This tries the bit of variation. You're going to hit a crack. Now, come on, Bish. That's skill from the bowler, surely. The Caribbean Airlines scan. Look, you can win a trip to attend the Republic Bank CPL final right here. Post a fan photo to Caribbean Airlines using social media hashtag CL2CPL to win. Cal, where are you? Get on it. Cal to CPL and get the tickets to get along to the finale. Oh, it's contagious. The wides, that is. And it goes all the way to the fence. And for viewers at home, that has come about because Chris Green has a long on and a deep backward square leg. The only 2 fielders out there to circle. So he's trying to bowl a tight line at the stumps to these 2 left-handed opening batters. It went wrong there.